मिरर में प्रैक्टिस कर लो, खुद को रिकॉर्ड करो, ठीक है, प्लेबैक करो, सुनो कि कहाँ इशू है, क्योंकि विजिटेड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। I visited there to counsel, to हाँ, motivate मतलब वहाँ पे क्या किया patients there and provide some help. तो सरदार जी, आपका नाम क्या है? नहीं, पीछे जस अर्नब, सीवी लाए हो? एक बार आपका इंटरव्यू हुआ है, प्राइज दिया हुआ है, चलो आओ। अभी अपना 180 है आईपीएम में, 180 है। कोई ना कोई तो आईएम की कॉल आएगी। एक सेक्शन में लफड़ा है, इसमें मैथ्स में कम है। इंदौर में तो है कट ऑफ। एक मैंने आई थिंक भेजा था, जगदीप सर ने शेयर किया था, किन किन में नहीं है। रांची, तो फिर रांची करते हैं, तो चलो रांची को कोशिश करते हैं अच्छे से कन्वर्ट करनी। सिरमौर में भी शायद नहीं होगी। सिरमौर, हाँ, तो रांची, सिरमौर, और आपके मैथ्स नहीं है शायद, तो आप अमृतसर के लिए एलिजिबल नहीं। तो रांची और सिरमौर का चांस है, आ जाओ फिर। पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे? ठीक हो गया? कौन है अभी ये? Mr. Jasana, we'll do it for Sirmon. Please come. So, why this program? I've done a bit of research about the different IIMs and the programs they offer, and the BMS program at Sirmor appeals to me more because it has a more comprehensive list of subjects that span not only accounts, economics, and business studies, but also subjects from humanities such as sociology and consumer psychology. How introduce yourself? My name is Jasad, and I hail from Ludhiana. This is in Gujarat. It's a city that's known for its. Use your city name also. It's a city Last time also I gave you this feedback. It's a city that's known for its industrial prowess, especially in the fields of textiles and bicycle manufacturing. My parents are both businessmen. My mother is an interior designer. You're from commerce background? Yes. Very good. My mother is a businessman who was also an interior designer, and my father is an exporter of auto parts. You went through the recording of the earlier session or no? The full screen. Why Indian rupee is depreciating? Indian rupee is depreciating due to a mixture of reasons, starting with the US tariffs, which affect the Indian rupee because most of our imports, a lot of our imports were to the US, approximately 25%. And due to the tariffs there, those have decreased, which has led to a devaluation of the Indian rupee. Also, the situation in Iran with the blockage of the Hormuz Strait has also led to the rupee devaluation. What are your takes on Prime Minister Modi's advices, what he gave few days back to the country? PM Modi's advice indicates that India is in a tight spot when it comes to fuel reserves and uh, rare earth minerals. And overall, the advices sound when it comes to the broader budget. So, देखिए, if such kind of question is asked, first thing you should try to crystallize or point out which were the top three advices. वहां से स्टार्ट करो ताकि अगले को भी पता लगे बंदा आर्टिकुलेट कर रहा है अपनी बात को ठीक से। और मोदी की कौन सी तीन बातें इसने पिक करी और उन्होंने कौन सी तीन बड़ी बातें बोली और उसके ऊपर आपका क्या टेक है। तो तीन थ्री थिंग्स वर ट्राई टू ट्राई टू reduce petrol consumption. For this, he suggested various measures like work from home, public transportation, improve public transportation. इनको define करो, थोड़ा explain करो. Then he said, um,
produce this cooling of vehicles, boiling of vehicles. Huh? Gold वो अलग purchase. है, second है. मतलब under petroleum he said few things. Then he said don't buy don't buy gold for 1 year. दो ही पकड़ लो, दो उन्होंने मेन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की. तो इसमें भी अब you have to give your opinion. If your father is told he should start going from his home to the spoken point area or anywhere where he works through public transportation, just evaluate. Is adequate public transportation system available in the country? It's already overburdened where it is, and in many living apart metros in B cities, C cities, it is very poor. Even if you have to travel from Chandigarh to Ambala or Chandigarh to Ludhiana, the buses are overcrowded. The trains are very limited, one in the morning, one in the evening. And then when you land there, from station, if you have to go to industrial area, sector 17, etc. Take an example of your nearby cities. You have to get the work done. Again, you have to take Ola Uber. The local transportation system, buses, trains, metros, monorails, they are only available in two major cities, Mumbai and Delhi at present. Small pockets in other cities. तो इसको इस तरह से अगर ये आपने अपना एनालिसिस साथ में कह के आर्टिकुलेट करके बताया तो आपको 10 में से 10. सिर्फ इतना बताया कि मोदी जी ने क्या बोला है तो 3 या 4 आउट ऑफ 10. और कहाँ पे गवर्नमेंट को और कुछ करना चाहिए उसमें वो भी बता दिया साथ में, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. Government now, okay, we have sensed the crisis, so government is talking about public transportation. But unfortunately, the planning, the execution in B cities, small cities, is very poor. Is unfortunately very poor. Mostly our government is reactive, not proactive. ऐसे words use करने का. Sir, if we take the case of the latest advices by our Prime Minister, I think in a crisis situation, what he has advised from his side as a leader, he has done nice. He has said two major things: reduce the petrol consumption. Secondly, don't go buy gold for 1 year. Coming to the first point, he has said work from home should be promoted, public transportation should be improved, pooling of vehicles should be there. Unfortunately, over the years, I have seen, even irrespective of which government, in India, the governments have been reactive, not proactive. The public transportation system in a sea city like Ludhiana does not exist at all. The only public transportation facility which exists in our city is auto, 10 रुपी शेयर्ड ऑटो. अब देखो ना, ऑब्जर्व करो क्या है. अगर आपके पापा ने कहीं से जाना हो, ऑफिस जा सकते हो ऑटो में बैठ के? नहीं सर. With his bag and his cash, everything? No. So what is the public transportation is in the C cities is this. Coming to B cities like Chandigarh, etc. Again, Ola Uber. Again, a one person being transported. And polling also, unfortunately, it is not that the law and order situation has to improve before such things can become. People can, with a full comfort of psychology and security, people can go for it. अब आप पूलिंग करते हो, एक ब्लावला कंसेप्ट है गाड़ियों का. अब ब्लावला में पता ही नहीं आपको कौन साथ में कौन नहीं है. कई बार हुआ है कि पीपल वर हरास, सम थिंग्स वर स्टोलन एंड दे वर, मतलब 2 hour drive became 4 hour drive. The other person was drinking, other person was eating somewhere. So these kind of things are, so in long term, I think this or visionary answer, smart answer. Sir, this crisis may end very soon if there is peace deal which is becoming near to a reality comes in place. But I think if the government even now becomes proactive, it should start developing the public transportation in such a way in A cities, B cities, C cities, D cities, that the really our consumption can reduce by 20-25%. ओके सर. सो आपने इसमें क्या बताया कि विजन ये भी बता दिया, एक तो आपने बता दिया मोदी जी ने क्या कहा. कोई भी ऐसा पॉइंट हो, कहा क्या, दो मेजर पॉइंट वो आर्टिकुलेट करो.
उनके अंडर क्या कहा ये कहो, उनमें चैलेंजेस क्या हैं वो बताओ, और ये बताओ कि आगे आज का तो क्राइसिस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने सही बोला, क्राइसिस में गो अवे वेरी सून बिकॉज द डील विद अमेरिका एंड डील बिटवीन अमेरिका एंड ईरान कैन गेट साइन एनी डे। वो विजन दिख गया आगे का कि आप करंट अफेयर को भी देख रहे हो, फिर आप बोलो वो तो हो जाएगा, बट उसके बाद आई होप द गवर्नमेंट बिकम्स प्रोएक्टिव एंड डज नॉट जस्ट स्टॉप द थिंग्स हियर। I hope कहो, I hope and wish that after this crisis gets over, the government really now starts acting seriously on improving public transportation system in A, B, C cities and D cities all across. And that quality, that timings, the availability of seats, the dynamism, etc., should be done in such a way that really people, it is comfortable for people to travel through public transport. Yes. Not inconvenient, not risky, not over time wasting. ये इश्यूज हैं जिनके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे हम नहीं जा सकते। आपके सामने है लुधियाने की हालत। हम बड़ा शहर है, पंजाब की नंबर 1 सिटी है, क्या है अपने यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन? ऑटो, वो भी शेयर्ड ऑटो, खटारा खट 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 खट, हालत खराब, पोल्यूशन इतना फैला रहे हो। बसें कोई दिखती है रेड कलर की टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी, कोई उनका टाइमिंग नहीं पता, कोई उनका रूट नहीं पता, कोई उनके नंबर्स नहीं दिखते, डिस्प्ले नहीं होता, कुछ नहीं। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हम, अब पता ही नहीं, टाइमिंग ही नहीं पता पब्लिक। यस सर। तो ये अगर आपने कर दिया कि नाउ आई होप गवर्नमेंट विल बिकम प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। अब आप देखो नीट, उसमें भी यही आएगा आपका, अगेन यही यूज कर सकते हो आप। आई थिंक सर अनफॉर्चुनेटली अवर गवर्नमेंट्स आर रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। जैसे आपने स्टेटमेंट देनी उनके कान खड़े हो जाने, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट देने वाले 2000 में से 20 बच्चे होंगे, बाकी सबने नॉर्मल जो न्यूज सुन रहे हैं, जो थोड़ा बहुत किसी ने कराया है उसी को बोलना है। जैसे ही आपने बोलना है कि सर आई होप इन नीट, आई थिंक वी हैव सीन द सेम प्रॉब्लम ऑफ आवर गवर्नमेंट और आवर गवर्नमेंट स्टाइल, दैट इट इज रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। यस सर। टुडे व्हेन यू नो IP in this firewalls, all internet securities are so high. I think when all the tests are online, it's very painful and strange that why important tests like NEET or even CLAT for law are still taken on a paper basis. In a paper based test, there are many, the chances of error, chances of it getting leaked are very high as compared to an online exam being created and locked, where only 1 or 2 senior most people of NTA know the password to access it, and only then 5 minutes before the test start, that password will be shared and shared with the administrators of different test centers. आप करेक्टिव एक्शन भी बता रहे हो। यस, ये है दो फर्स्ट लिस्ट कन्वर्जन के फॉर्मूला। प्रॉब्लम रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव, उसको डिफाइन किया क्यों कि जब सारे टेस्ट ऑनलाइन है तो क्लैट और ये सब क्यों पेपर बेस करते हो, और पेपर बेस में क्या फियर है उनको बताने की बजाय आपने साथ ही उसको भी आर्टिकुलेट किया कि इन पेपर बेस द पॉइंट्स and the chances of leakage are very high. Yes. Because firstly at the setting stage, then it is sent through Word document to the printing press, how to keep a control there. Then after printing, how many copies are printed, even if one extra copy is printed and is kept somewhere or taken away by someone, or somebody takes snaps over there in the during the printing process, how do we control it? When the points of leakage or the possibility of the points of leakage possibility are very high, then to detect it and to control it also becomes very difficult. ये बोल दिया आपने तो उनको समझ आएगा बंदा प्रॉब्लम सॉल्वर है, एनालिसिस करता है, इसके बाद सोल्यूशन है, ओवरऑल प्रॉब्लम को देखता है, क्या बढ़िया बंदा है, ये कल को मैनेजमेंट में बल्ले बल्ले करेगा, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगा, तो आपको फर्स्ट लिस्ट में वो ऑफर देंगे। ऐसा कोई स्पार्क किसी एक पॉइंट पे छोड़ा है अगर आप टेबल पे, उनको मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र पॉइंट्स, तो हो जाएगा काम। जैसे आपने ये अच्छा दिया आंसर, रिपीटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी रिपीटेड डेप्रिसिएशन, डिसेंट आंसर,
तो आपने इसको भी एंड में वहां रिलेट करना है, रुपी से कैसे हुआ। आपने बोला यूएसए की एक्सपोर्ट डाउन, ये डाउन, फिर आपने जैसे मैंने वो वर्डिंग बोली कि व्हेन ए कंट्री गोज एवरी डे टू बाय डॉलर्स बाय गिविंग इट्स करेंसी, of course the currency which is being used to buy higher amount of dollars every day will depreciate. Yes, sir. डिमांड सप्लाई, इसको ले आओ वर्ड को, डिमांड सप्लाई, इस तरह से उससे लिंक करके फिर आप निकलना है बाहर। निकले तो 10 में से 10, नहीं तो 8। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. वॉट एवर यू स्पीक व्हेन समथिंग इज आस्क्ड अबाउट करंट अफेयर एवरीथिंग, इन द एंड यू मस्ट कनेक्टेड विद द टॉपिक। इनको एक्सटेम्पोर दिया गया था, एक में डिमोनेटाइजेशन, इसमें आईएम रोहतक में, और कोई फॉर्मेट नहीं था कि आपको एक्सटेम्पोर होना है, माइक्रो प्रेजेंटेशन होना है, कोई फॉर्मेट में नहीं था। इट कैन हैपन। इन रोहतक ही वाज आस्क्ड अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, सॉरी इन इंदौर। आज भी पूछा जा सकता है 80% चांस, हाउ डोनाल्ड ट्रम्प इज हैंडलिंग, बोलो हाउ हाउ डू यू रेट डोनाल्ड ट्रम्प? डोनाल्ड ट्रम्प देखता हूँ कैसे आप करते हो। Well, sir, I'm assuming you're talking about his second term. वेरी गुड, शाबाश। ये लास्ट टाइम हुआ था हमारा, Last time हुआ था। ही बच गया। दिस इज द वे इट इज टू बी डन। पहला आपने स्मार्टनेस दिखाई कि इवेल्युएट डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प एज ए होल, वो पहले बिजनेसमैन था, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म। सो आई थिंक यू आर रेफरिंग टू द सेकंड टर्म। जैसे ही इन्होंने ये बोला, पैनल विल गेट इम्प्रेस्ड कि बंदे को क्लियर करना आता है पार्टी पॉइंट को, मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ और ये क्या बात करना चाह रहा है, पॉइंटेड बात करेगा, स्मार्ट है बच्चा, इंप्रेशन वहीं पड़ गया। ओके, Well, थोड़ा ऊंचा बोलना। there have been a number of controversial policies and number of controversial actions taken by Donald Trump in his second term, ranging from the tariffs to engaging in war with Iran. टैरिफ की बजाय अब यही यही छोटी छोटी चीजें, इन्होंने क्या बोला, टैरिफ। टैरिफ से क्या है? टैरिफ तो लगा सकती कोई भी कंट्री, इंडिया भी लगाती है, एंटी डंपिंग भी लगाती है, 3, 4, 5, 10, 15%। चाइना पे भी लगाया हुआ कुछ आइटम्स पे, स्टील वगैरह पे। तो टैरिफ नहीं, हाईली एक्सेसिव टैरिफ्स। Highly excessive tariffs on some countries that dependent on the United States for their trade. To the war with Iran and how it was handled, and a similar वेनेजुएला इशू, सबसे देखें, अब ये मेरे हिसाब से वेनेजुएला इज ए इशू, बट इज ए 25 पैसा पॉइंट। सबसे बड़ा पॉइंट जो ट्रम्प का सबसे बड़ा है, इवन टैरिफ वाला भी ठीक है, आपने टैरिफ, प्यूनिटिव टैरिफ लगाने की कोशिश की, दूसरों ने भी आपको ब्लैकमेल कर दिया, चाइना ने भी कह दिया मैं आपको क्रिटिकल मिनरल नहीं दूंगा, बाद में आपने रीनेगोशिएट किया, वो भी 50 पैसे का पॉइंट है। सबसे बड़ा 1 रुपी पॉइंट है कि ही हैज, आई थिंक इन ए बिग वे, मतलब उसको आप इसको और डिफाइन करना है। जैसे आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प second term. I think the biggest damage he has done to America for the long term and short term both. अब ये words use करने हैं, long term and short term both, is he has critically, severely, या severely कह लो, he has severely damaged ties with the old allies of America, like NATO, Canada, even India, which was becoming ally of USA from last 12-14 years. आपको पता है क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट, तो चाइना ने बनाया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड हिमसेल्फ, सॉरी यूएसए ने बनाया, यूएसए अगेंस्ट चाइना। चाइना वाज डीपली कंसर्न्ड अबाउट इट, डीपली थ्रेटन्ड अबाउट इट, क्योंकि विद दीज 4 टुगेदर, इफ चाइना इन्वेडेड ताइवान any day, these 4 they fight with China, China can't stand these 4 together. So ally was Japan, ally was India, ऑस्ट्रेलिया चलो कोई बहुत ज्यादा मिलिट्रीली नहीं था, बट स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाइज इट वाज इम्पोर्टेंट। इधर इंडिया से उसने खराब किया। इंडिया से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था नेटो, विच वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अमेरिका, ए बिग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस एज ए डेटरेंस टू रशिया, चाइना टुगेदर। सो ही हैज unfortunately, sir, I think the biggest disadvantage or disservice he has done to America in the short term and long term is he has spoiled America's relations with its strongest allies, which are NATO countries and even Canada, which was historic, very strong allies of this, and that is one of the biggest blunders.
उसके कारण ही आज रशिया को इतने आराम से हौसला मिल रहा है कि मैं कीव पे आज रात को पता है कितना 111 मिसाइल्स मारी है रशिया ने, 111 मिसाइल्स ऑन वेरियस सिटीज ऑफ यूक्रेन एंड 130 प्लस ड्रोन अटैक्स overnight. Many civilian installations, many malls are targeted. So Russia is now feeling NATO is broken. NATO versus America is चल रहा है ग्रीनलैंड के इशू पे, which was part of Denmark, which is a NATO country. So he said, I will invade, I'll take it by force. So this is the worst disservice he has done to America. If in this Iran war, NATO was with USA, this war would have ended in 3 to 4 days. Because 17, 18 intelligence agencies would have been working together. 17, 18 intelligence inputs would have led you to the missile city on the first day, second day. Right now, it is just America and Israel, two countries working. And others, even if they have intelligence, they are concealing. They are not letting him use their base. Morally, he is not getting their support. Diplomatically, he is not getting their support. And militarily, he is not getting their support. And intelligence, which is very important in today's war game. In intelligence, he is not getting support of 22 countries which would have otherwise supported him. तो इसीलिए सबसे बड़ा डिसर्विस उसने ये किया पंकज जी नेटो के साथ. अब टेरिटोरी वाला पॉइंट छोटा है. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, आई थिंक द बिग डिसर्विस ही हैज डन, more big bad things he has done is he picked up the president of Venezuela. He's showing utter respect and importance to the international law. He's trying to set a new norm that whosoever is powerful can attack anyone, can take their president off, and will say that now I will sell its oil, now American companies will go and do this. He has reduced the importance and the significance of international laws, for which a superpower like America, which controls 25% of world GDP, has funds to a large extent to UNESCO, UN, etc. If such a big important country starts, breaking international laws in this way, it sends very bad signals worldwide. उस दिन वेनेजुएला था, कभी इंडिया भी हो सकता है. तो मोदी जी बात नहीं मानेंगे, आ रहा हूँ मैं इंडिया को इन्वेड कर रहा हूँ, मोदी जी को उठा के ले जा रहा हूँ. हाउ वी विल फील एज ए कंट्री. तो ये दो मेरे हिसाब से प्रोड्यूस है बड़े पॉइंट्स उसके, जो सबसे बड़े 1-1 रुपए वाले पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप. और इनको आपने बता भी देना क्यों है. अब इंटरनेशनल लॉ को फ्रेम कराने वाला कौन था? यूएन. उसके पीछे कौन था? अमेरिका. मॉरल हाई वैल्यूज लेनी, ये करनी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल राइट्स, फलाना ढिमका. अब आप क्या करोगे? यू आर लूजिंग मोरल स्टैंडिंग इन ऑल दीज पॉइंट्स. So when a superpower who created, who conceptualized UN, who conceptualized international laws and their adherence, itself starts breaking them with with ease every day, it's bad for the world order and it's bad for America's image. Both. ऐसे ये पॉइंट है जो 10 में से 10 वाले, और उनको साथ में बताना क्यों. चलो आगे चलते हैं. प्राइम मिनिस्टर एडवाइस से हम चले थे कि उसको भी आर्टिकुलेट करना है कौन से दो. फिर उसमें उन्होंने क्या बोला. दीज आर वेरी गुड इन टूडेज क्राइसिस सिचुएशन, बट आई फील सर एज ए सिटीजन दैट दिस क्राइसिस में फिनिश वेरी सून विद अ डील वेरी क्लोज टू बीइंग साइन. उस टाइम तक साइन हो चुकी तो बोल दे. बट आई थिंक वी शुड, द गवर्नमेंट should learn lesson from it and take it as a project that it wants to reduce India's oil imports by 25-30%. And for that, proactive ways of improving public transportation, not only in A cities, B cities, C cities, B cities, has to be done. You can give an example of London. Central London is very expensive. In Central London, if you want to take your car and park it, you need a permit, and you have to give a very good amount to be able to take your car in the zone, central zone. Then similarly B, C, D. So people who stay on the outskirts of London also, they take
uh, there is a underground. What is that called? Subway. Even the presidents, vice presidents of the company, they travel, and it's very convenient. Almost every 10 minutes there is a subway. Every 5 minutes there is subway from main station taking you to the inside. So this kind of proactive planning is needed for public transportation, quality, convenience, and time efficient and known to everyone. Then you can reduce. So I hope the government will not just now not act on it, but act proactively so that long term we have benefit. Okay. Yes, sir. Okay. What are the types of depreciation methods? There's two types of depreciation methods: straight line and written down. In straight line method, the amount of depreciation on the asset is fixed every year. However, in the written down value method, the amount of depreciation changes uh, uh, based on the revised value of the asset every year. Advantages and disadvantages of both. Straight line in straight line method, the depreciation is easier to track and account for because it's fixed every year. However, the in the uh, written down method is more oriented towards real world situations because the value of the asset never goes negative, and it's better for accounting for the true resale value. No. Anything you want to add on this? What is accelerated depreciation? Uh, I'm not sure. Is there any asset which you think loses value at higher rate as time goes on? Do you think written down is the best way for if you had to come up with your own formula for depreciation? How would you charge it? I would stick with the written down method because, like I said, it's better for tracking the actual value of the asset, and the term of use, the period of use of the asset also increases with that as Do opposed you think assets lose value at fixed percentage every year, or does it vary from year to year? to it varies from asset to asset and the form of the method of depreciation you take Let's say it's a computer. a computer. Do you think it will lose same value from year 2 to year 3 and then year 3 to year 4 Not necessarily. and same percentage also? It depends on what the new technology in the market is and what the use case for that particular computer is. For example, a computer that has specifications that may be relevant even after a few years will hold its value better as compared to. Exactly. So based on all this information, if you had to suggest a method for companies to charge depreciation, what should that For companies to charge depreciation or on their books to show depreciation on their books? I would use a method that accounts for what the market, the changes in technology and advancements in technology and the current market for the asset is. Not sure. That's it. And how will you get to that? Uh, by researching past trends and what the possible future outcome is. And what do you think is the problem with this method? Why is it not followed today? Because it's highly variable and uh, the its implementation might vary from company to company. Okay. Which accounting malpractice does this highlight? I can't remember it. What are some of the accounting malpractices that companies do?
overestimating their depreciation so as to show lesser profit in their books. What is this called? I'm not sure. It's called window dressing. Window discovery. And which are some of the other ways that companies show profitability? I'm not sure. Sorry. When will a company want to show more profits, and when will they want to show less profits? A company might want to show lesser profits when they want to give a lesser amount in dividends to the shareholders, and a company might show more profit when they want to attract newer shareholders to invest in the company. But in both cases, company is listed. Assuming the company is listed, yes. So right answer for this would be that listed company would not want to intentionally show lesser profitability Okay. just for dividends Okay. because your share price will go down. Okay. Right? That makes sense. It leaves you with less money to Okay. work. That's right. If it's an unlisted company, they want to pay less taxes. Okay. Then that is Mhm. when you will show less profitability. Okay. If you are a listed company, you will want to show more profit. Got it. One way to do that is to show other income. Other income from investment. Company has bought bonds of some other company. They invested in some other. वहाँ से they received interest. Interest from bonds is big ticket item on every company, on every listed company's balance sheet. Okay. So I see. yeah, that is when they will show higher profits. Especially if company is going for IPO, then their valuation will go up Yep. a lot based on Makes sense. listed company will not want to show Lesser profit. lesser Got it. profits. Okay, so what is concept of conservatism? Concept of conservatism is that you overestimate your expenses and underestimate what your revenue would be uh, in the coming years in advance. Okay, give me an example. Uh, I can't think of one right Okay. What are the important ratios? What is ratio analysis? now. Ratio analysis is done when a company wants to check metrics like its profitability and liquidity, wherein say it takes a Company ratio. wants to technique. Ratio analysis is a tool used to compare performance of one company vis-a-vis another company of the same sector. Number one. Number two, and also to know the financial situation of a company from investors' point of view. ये है इसकी right definition, macro level, right? Correct. Okay. What are the important ratios? Liquidity ratio. नहीं पता. नहीं. ये 80% probability question है for IIMs. Okay. Ratio analysis and top ratios. Okay. Most important जो सबसे ऊपर आती है debt to equity ratio. What it should be ideally. And why भी पूछेगा आपसे. IIM में लेना उसने भाई Yes, sir. नाम नहीं सिर्फ लिखे जाना IIM सिरमौर की पोल आगे तो हो जाएगी या IIM रांची की पोल आगे तो हो जाएगी ऐसा नहीं होना है पूरा तैयारी करनी पैनी है. Yes, sir. 428 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ 220 ਆਪਣੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੇ उसमें में सारा वेरिएंस एनालिसिस सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन एवरीथिंग तो पब्लिक कर रही है आपका कंपटीटर कर रहा है. ये तो पिछले में भी पूछा गया था रेशियो एनालिसिस जिस तरह ही ਉਹਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਮਿਲਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੇਸ਼ੀਓ 1 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ 10 ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ.
लिख लेने सी पॉइंट्स. Yes. It should be ideally 1:2. Why it should be ideally 1:2? The equity should be higher than the debt. It's from investor's point of view, it shows stability. Agar it is 3:1, so that means debt is too high and the equity is very less. Owners will run away any company, will declare it bankrupt. Yes. So the debt will be on the burden. So you as a shareholder will get nothing. Your share values will go down if you buy that company share. So, okay. फिर आगे बच्चों से ये भी पूछा गया है, गैस से make a guess how much would be TCS Tata Consultancy Services debt to equity ratio. मैंने ये भी कराया हुआ कैट के इंटरव्यू, पूछा भी गया है इंटरव्यू IIMs में, कितनी होगी गैस मारो. अब समझ आ गया डेट टू इक्विटी. TCS is a almost 40-year-old company. Main assets are human cost है, बाकी क्या है बिल्डिंग है, और अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 8,000 crore प्रॉफिट पर ईयर और ऑलमोस्ट 30-40 years. तो इनको क्या डेप्ट की जरूरत होगी? नो सर. खुद सोचो. तो इट इज as low as 0.25 or something 0.025. It will be very low, less than 0.5. ऐसा ही बोल दो, नहीं भी पता. Okay, sir. Give a logic, apply logic. Company which is into profit for 30-40 years, 5,000 6,000 crore profit every year. What is the main input cost? Materials. What are the assets? Humans और बिल्डिंग. तो जिसके बाद 8-8 5-5 हजार करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, वो अपनी बिल्डिंग ही बना दिया होगा आपने. क्या जरूरत है उसे डेप्ट लेने? वो तो डेप्ट दे सकता है लोग. Yes, sir. तो इसी तरह इसमें होती है, जैसे आपने बोला लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियोज में बहुत सारी हैं. एसिड टेस्ट रेशियो, इन्वेंटरी टू टर्नओवर रेशियो, एक्सेट्रा. करंट रेशियो, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज. एसिड टेस्ट रेशियो होती है, लिक्विडिटी रेशियो नहीं आती है. आई थिंक इट इज अ पॉइंट टू विच यू कैन, विच टेल्स यू हाउ मच डेब्ट यू कैन रेज मोर. व्हाट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू? नहीं बढ़िया. ये भी ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ 420. ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੀਓਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ. अच्छा. 8 घंटे 6 घंटे सोवो, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ, 18 ਘੰਟੇ. ਅੱਛਾ. ਜੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇੰਜॉय भी करोगे लाइफ में. बेस्ट बच्चे, बेस्ट टीचर, बेस्ट एनवायरनमेंट. भोले भाले क्वेश्चन नहीं मैं पूछ रहा वाई आए वाई दिस प्रोग्राम हो गए. यस सर. हम थोड़ा जिहा गहराई वाला काम करना पैना. यस सर. डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ पूछेगा एनपीवी ਦਾ. ओके. कितना है ना एनपीवी 11वीं 12वीं? नहीं भी कितना है पता लगाओ. अच्छा. डिस्काउंटेड कैश फ्लो, highlights of the last budget, anything you know. पता ही नहीं होना लेना देना कुछ. बजट वास्ते एक पीपीटी पाई हुई है. देख लो. 3-4 हाई बुलेट पॉइंट ले लो, बाकी अगली क्लास में 3-4 करा दो. आप पे पढ़ो थोड़ा यार लास्ट बजट पे मैक्रो लेवल. ये करते कुछ नहीं है बजट में. अनाउंसमेंट बहुत अच्छी करती है गवर्नमेंट. बजट सुनने में लगता है 9 नंबर आउट ऑफ 10. द एसेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग. करेंगे इम्प्लीमेंट तो कर देंगे कुछ. 40,000 crore or 20,000 crore are allocated for R&D improvement, research and development improvement. Very much required because we don't have a mobile, we don't have a laptop, we don't have PCs which are designed and made in India. Our vehicles, Tata Motors cars are not very reliable, have huge vibration level. So we go for Hyundai, we go for BYD. Mahindra is trying to catch up. So Mahindra should be given 8-10 crores or maybe 100-200 crore, 300 crore, 1,000 crore by the government out of those 20,000 crore. You have done well in R&D. Take this as a award. Do it more. Why there is no? Why we have to buy OnePlus, Xiaomi, Samsung? All are international. Some profit goes out, royalty goes out. It's just product produced in India. The profit is not retained in India.
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪਥ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਨਰਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਸੋਵੋ, 2 ਘੰਟੇ ਫਿजिकल एक्सरसाइज, मेंटली फिटनेस, ब्रीदिंग एक्सेट्रा 10 चले गए, 14 घंटे ਦੇ ਚ ਲਗਾਓਗੇ। जिपनाट भी कर दो सर, जिपनाट भी कर दो साइड बाय साइड। ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਚਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ ਜਿਪਨੈਟ। ओके सर, 5 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। थैंक यू सर। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਡੀਅਰ ਕਾਲ। ਜਿਪਨੈਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ 4 ਘੰਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਓ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेन का सीवी यहीं पे है, आ जाओ। When we cover interview in detail like we did for him or him, that is 95% of your what you have to cover. Uh, then it is what we are giving you is just a practice. Yeah, go. Please. Yeah. What is the meaning of Mayan? So Mayan means shining. Mayan means shining moon. वही गिर गया शाहीन गुरु। Moon, moon. मून यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। इतना क्लियर नहीं ऐसे बोलना है कि इधर तक पहुंचे भाई, कानों तक, उधर ही नहीं गिर जाए। शाइनिंग मून, so you are a shining moon. That's what Tauji gave me, man. Is the moon actually shining I hope so. scientifically? No, Is it it's a actually luminescent reflecting the object? sun's light. Okay, and what is the moon made of? Moon's, not sure of its composition. आपके नाम से रिलेटेड तैयारी कर लें, थोड़ा सा 4-5 मिनट ही लगेंगे जानकारी में। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Greetings, panel. My name is Mayank Joshi. क्या बोले पहले? Greetings, panel. चलो, एक जरूरत नहीं है। चलो, इट्स ओके, कैरी ऑन। My name is Mayank Joshi. I hail from Ludhiana, Punjab. My father runs and manages a business in textile. My mother is a homemaker, and my younger sibling is currently studying in grade 10. As for my academic record, I consistently perform well, scoring 96% in grade 10 and 96% in grade 12 as well. Apart from academics, I have participated in various extracurriculars. I have attended a finance program that was conducted by National Stock Exchange. I participated in a national level debate competition, and I also won a Shark Tank style competition. I also participated in quiz and chess competitions as well. I consider myself to be very curious, competitive, and always eager to learn. And uh, growing up around business discussion, it sparked my interest in management and finance from a very early age. So that's why I applied for this program, considering my inclination to follow management in future. Okay, why I am Rohtak's IPM? The reason why I'm applying for this program primarily stems from three different reasons. The first one, I consider myself to be very competitive, and the peer group that I will have in IIM Rohtak would be one of the most qualified and skilled in all of the undergrad programs that are present in India currently. And second reason is the diverse curriculum that it offers. It encompasses various numbers of multidisciplines such as sociology, philosophy, economics, and finance, which will help me cultivate a very holistic personality. And the third and the most primary reason is that my inclination toward studying management and finance as a way to elevate my future career, and the best undergrad course is offered by IIM. So you need not mention about yourself. I am very competitive person. और competent बोला था, competent. Competitive. No need. That will emerge through the interview. We don't need to until unless they ask what are your strengths or why we should select you. Here they are asking why I am Rohtak. अपनी सेलिंग ना करें प्रोग्राम के बारे में। तो एक खटका एकदम, वो पैनल को भी खटकेगा कि अपनी तारीफ ही करी जा रहा है। जब तक पूछा नहीं उस तरह से ना करें। Where do you see yourselves 10 years down the line? 10 years down the line, I do not have a clear path, but I have a sort of a vision, and that is that I wish to work in a investment banking firm or any financial consultancy firm
I wish to have some sort of experience in it. I hope so that I complete my management in both undergrad in management and postgrad also with specialization in finance. How is Indian economy doing? Very probable question. Indian economy has been hit by certain factors. And first of all, numerically, Indian economy's growth rate is currently 6.5%, which has fallen from the previous year's 7 point something. And also, Indian rupee has been depreciating for past few months due to various factors. And on a long-term scale, I believe the Indian economy is growing, but growing at a slow rate. Gee, here you had an opportunity to hit six. The ball was in your range where you could have hit it for six, but you just took one run, or you took chalo, two runs. GDP growth rate was good, 6.5 last year का भी बता दिया 7 point something was good. इधर जब रुपी डेप्रिसिएशन बताने लगे वेरियस फैक्टर्स क्यों आप बताओ ना जब आपको फैक्टर्स पता है आपके पास अपॉर्चुनिटी थी 6 रन बनाने की तो आप इतने पे क्यों छोड़ दिया वेरियस फैक्टर्स यू नो द वेरियस फैक्टर्स बिकॉज इंडियाज एक्सपोर्ट माइक्रो में नहीं भी जाना मैक्रो में जाओ इंडियाज ट्रेड बैलेंसेस इंडिया ट्रेड बैलेंस has become you India's trade balance has become which was already negative has become further negative. The India's negative trade balance has further deteriorated because of less exports and more imports. Bill because of the increased crude oil price, which constitutes around 70% of India's total import bill. ये फिगर पता हो तो भी ना बोलने तो फिर मुश्किल है चौका चक्का मारने का याद अपॉर्चुनिटी थी वहां पे बॉल दे दी जहां मैं स्ट्रॉन्ग धूप पे भी 1 रन लूंगा तो कैसे होगा और आपने बोला इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग गुड, राइट? बट साथ में आपने बोला कि जीडीपी ग्रोथ रेट पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है ऊपर और ट्रेंड रुपये भी डेप्रिशिएट हो गया है, तो फिर तो गुड क्या हुआ इसमें? आप ये यहाँ इसको स्टार्ट ऐसे करना है सर हाउ इज इंडियन इकोनॉमी डूइंग देयर आर सर सर्टेन पॉजिटिव points in the Indian economy as of today there are some negatives. Firstly, I will talk about positives. GDP growth 6.5. Number one. Number two, fourth largest economy. Fourth largest economy. Number three, fiscal deficit is within control, less than 2% for last many years. So these three are very big macro level positives of Indian economy. Now coming to the negatives, rupee depreciation. Number two is per capita income. Per capita income, in which India's rank is now 134th in the world. In the world. ये बोल दिया इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला कैसे नहीं होगी सिलेक्शन दो चीजें बड़ी बता दी इधर तीन इधर पॉजिटिव अब ये 134th इन द वर्ल्ड अब वो आपसे स्मार्ट होगा तो पूछ सकता है एवरेज इनकम कितनी है 25,000 कुछ होगी पर पर्सन कैपिटा पर कैपिटा ये आपसे पूछ सकता है फिगर याद करके जाना मोटा मोटी ठीक है तो बताओ देयर आर सम पॉजिटिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देयर आर सम नेगेटिव 99.9% लोगों ने पॉजिटिव ही बता दिए दोनों साइड की स्टोरी बता हाउ इज Mayank as a which is your favorite subject My favorite subject is certainly mathematics. So, what is a differentiable function? The differentiable function is that does not that does not break or have any kind of jumping point in it. And what is a continuous function? A continuous function is that it is has no kind of jump in it. You just said the same. In differentiable, there's sorry, I would like to differentiable point. There's no sharp point movement in the differentiable function. And in continuous function, it is smooth. It may be sharp, but it always You are continuous. defining a graph, Yes. not a function. What is a differentiable function? What is a continuous function? How do I know if I look at a function? Is it a differentiable function or a continuous function? Sorry, sir. So differentiable function is when its derivative exists at every point. Slope of that function is never undefined, basically, right?
And continuous function is when limit of that function is never undefined. Limit continuity derivative, right? LCD of that. Okay. So what you are describing is the shape of function, sharp point, smooth line, all of that. But f of x is defined at every x is continuous. F bar x, basically f of x upon x is defined at every point is differential. Now give me example of non-continuous function. Example of discontinuous function. Discontinuous function. अभी इधर ध्यान दो ठीक से Signum function is an example of a discontinuous function. Which function? Signum function. Okay. Draw. Why is it not continuous? It is not continuous because its range is only three numbers, that is 1, -1 and 0, and for every x value we put in, we only get these three values, and there's also a jump in it, and we have to it is not defined on 0, I guess. Okay. So this is for everyone. They may ask you to draw a graph, right? Very common. Usually IIM Indore they ask to draw a graph of tan x and show कि कैसे है एक इनसे करवा दो एक उनसे करवा दो मान लो ठीक है हाँ बट see जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना it has to be very well labeled ठीक है this is a good graph right but इसमें I don't know x axis क्या है y axis क्या है so x y 0 जैसे -1 है तो यहाँ भी 1 और -1 हो मतलब बेसिक हाइजीन चेक है कि व्हेन यू आर ड्राइंग एनी ग्राफ शुड बी अ वेरी नीट एंड क्लीन ग्राफ बिकॉज आफ्टर यू लीव द रूम दिस पेपर विल बी विद देम प्रेजेंटेशन मैटर्स राइट मेक श्योर ऐसा इट शुडंट बी लाइक ये छोटा है ये बड़ा है मतलब बेसिक हाइजीन लेबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट मार्किंग ओरिजिन मार्किंग एक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड टू also mention why this is not filled why this is normal circle not a filled circle because it shows discontinuity okay otherwise good graph no worries okay what is your favorite topic in maths Calculus. what part Integral of calculus. integral calculus okay so what is integration of sin x Minus cos x plus c okay and if I had to ask you to derive it cos x. how will you how does this mean intuitively for me what does cos x as integral of sin x mean in real terms I had to explain it to an infant or a child what I does can this I can make an attempt to guess. Integration means area under the curve, and in somewhat way, when we are drawing the sin x graph, the way to calculate the area under the curve would be by using the minus cos x function, I guess. So and why is it important to know what is area under curve it has wide varieties of applications, and I'm not sure why we should calculate, but it's surely used in various applications. so the real world application ना मतलब just keep in mind whichever topic it is the integral calculus okay it's your favorite topic then you are expected to know कि why you are studying integral calculus okay? so this was asked to me also कि why is differentiation important why even calculate derivative of anything so I gave example of rate of change कि for example if my there is a function I want to know how fast it is changing I will know the derivative so it tells me how my function is changing with time with some x variable similarly integration area under curve it is very important for your
aeronautical engineering, right? When you are studying any graphs, trying to understand, you have an objective function. I want to generate X amount of torque. अब मेरे torque का एक function है. What is the torque generated by? It is the area under that graph. So that is why integration is important. Now, who is the father of calculus? It is Isaac Newton. Okay. And prior to that, how were things being calculated, computed? I'm not sure. Sorry, sir. I will research on it. No idea. Fine. And if I to ask you to draw a graph of tan inverse x, can you do that? I can make an attempt. नीचे तो माइनस वाई है ना, जैसे आपने वाई लिखा है उसको कट गया. This would be pi by 2 or minus pi by 2? Oh, sorry. That will be pi by 2. And what is the formula of tan inverse x? Formula? Is equal to what? Y? I'm not sure of the formula, sir. So वो भी mention है. Y. Okay. Y is equal to tan Tan inverse inverse x x. का graph है. Because you will leave the room, but फिर वही है कि आप क्या बना के गए. It should be very clearly mentioned कि in this function y is tan inverse x and 0 पे उसकी value ये होगी. And अगर कभी भी कोई function discontinuous है, call that out and mention exactly. And you can also mention कि sir when you were thinking, right, अपना thought process भी बता दो कि sir I am considering values where I know that tan inverse x is 0 at 0 and at minus pi by 2 it is minus 1, at pi by 2 it is 1 and it's a snake function similar to tan x वैसे ही होगा. So मतलब dead silence best to avoid in a room. If you are thinking कुछ logically सोच रहे हो, right, तो बता दो कि मैं इस बेसिस पे इस ग्राफ को मैंने ऐसे बनाया है. अगर हो सकता है उस टाइम पे कुछ गलत भी बना दिया हो आपने, बट योर लॉजिक इज साउंड. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. What is a function which is discontinuous at only one point? I'm sorry, sir. I cannot recall any function. वाई वही बनाया था अभी वैसे. Tan inverse x. मतलब But we have to define its range now. only Only. discontinuous, it's only at 0, right? Otherwise ये function आपका पूरा continuous है. Okay. ठीक है. Yes, since now as an interviewer this would be a flag for me कि आपने अभी ये ड्रॉ किया है ग्राफ and I am asking you example of that function और वो आप बता दीजिए. ठीक है. अदरवाइज स्मूथ है. सिर्फ एक पॉइंट पे मेरा पेन ब्रेक हो रहा है तो ये सिर्फ 0 ओरिजिन पे ये डिसकंटिन्यूस है. सिग्नल फंक्शन आपका सही. Okay, why BJP won in Bengal? I believe that the reason for that is the poor performance of Trinamool Congress in West Bengal in the past few years. There was a rising upsurge against TMC's policies. Especially, there were many critics that TMC's
persuasion, there have been a very rise of misuse of public forces by TMCs, which created a sense of distrust among the people of West Bengal against the TMC Congress. And second of all, TMC was also accused of, not accused, TMC's policies were not what the people of West Bengal wanted, and West Bengal's economy was also poorly performing from the past few years. All these factors combined and created a sense of distress among the people that led them to choose BJP as the alternative for Trinamool Congress, against This Trinamool is good Congress. answer. They will give you 8 out of 10, Okay. or say even 9 out of 10. But what? How much we want? 10 out of 10. So rather than saying poor performance of Mamata government, you say anti-incumbency of 15 years against Mamata government. Mamata government was in power for 15 years. Yes. When you are in a power for 15 years, मैं आप बच्चे इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर इधर यहाँ का कराया हुआ भी सब भूल जाएगा, घर जाके तो पता नहीं कितनी वीडियो आपने देख ली. So BJP, why BJP won in Bengal? I think the Mamata government faced incumbency of 15 years. When we are in 15 years of power, many people get angry with you on many issues which you are not able to fulfill as per their aspirations. Their work you were not able to do, etc. etc. So 15 years is a long anti-incumbency factor which was acting against Mamata government. Number one. Number two is that there were incidents, there were rape incidents where Mamata government was seen trying to protect the top executives or principals of those institutions, the heads of those institutions where the incidents took place. They were not taken action against, they were transferred somewhere and no strong FIR named them, etc. Number three, this is very unique. Congress and TMC are members of India Alliance. But they fought this election separate. So Congress won around 3% votes, which led to division of anti-BJP votes, and it affected around 100 seats. So this was also one of the major reasons. Congress wanted certain seats from Mamata, say 25. Mamata said we'll give you 10 or 12. So Congress said okay, we'll not fight with you, we'll fight separately. We are a party which can make you win, and we are a party which can make you lose also. Because of that thing, they wanted to get 25 seats from her, which Mamata, her overconfidence did not give them. And because of that, around 3% votes went to Congress, which could have gone to Mamata and the alliance. And this 3 could have been even 4 because of the sentiment plus. This 3 is the exact number which Congress got, near 3, 2.75 something. If they were announced as alliance partners, because of the swing of the sentiment also, this could have been 4% impact, and it would have impacted around 100 seats, where the margins of defeat were less. Division of anti-BJP votes. Okay, these were the 2 macro level. And thirdly, BJP promised lot of development, improve law and order. अब कोई कह सकता है कि SIR जो हुई उसमें से कई लोगों के नाम कट गए, कई सारी सीट्स हैं, मोर देन 50% सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे SIR ज़्यादा डिलीट हुए हैं एंड TMC वॉन. इसलिए वो पॉइंट इतना सॉलिड नहीं है. लोग बोलते जरूर हैं TMC वाले SIR. So there are many seats where SIR related cutting of votes was very big, the biggest, but out of those almost 60% seats TMC won. So that is not a very relevant point. कई लोग वही बोलेंगे SIR.
That is not a very strong point. Strong points are these. और कई बार ये बोल सकते हैं कि इस बार बहुत सारी सेंट्रल फोर्सेज लगाएगी जिससे टीएमसी जो प्रेशर डालती थी, गुंडाइज्म करती थी, लोगों को जाने नहीं देती थी वोट डालने और डराती थी कि अगर वोट डाला और बीजेपी को डाला तो वहाँ से जहाँ टच करोगे अगर इतनी किस्म नहीं आए हम तुम्हारा वो काट देंगे, वायलेंस करते थे उनके खिलाफ एटसेट्रा. दैट कुड नॉट हैपन, बट दिस इज सब्जेक्टिव. So I would not like you to talk subjectively. So anti-incumbency of 15 years against Mamata Banerjee, where in some rape incidents etc., where protests were also taking place, her government was seen not taking action against the heads of the institution. They were just transferred in another place. No FIR. They were not named in FIR. The postmortems were not done properly. The CCTVs were not working. So the culpability of the head of the organization was not fixed because they were directly indirectly related to some TMC leader or herself. Anti-incumbency बोल देना और some rape cases were not properly handled, which led to a lot of sentimental issues, bad sentiment and anti-women. Then Congress won 3% votes. ये मैंने बताया बहुत important point. If they had fought together, the 3% could have been 4% plus. It would have easily made an impact on around 100 seats. ठीक है. Third आ गया BJP promised development and improvement of law and order situation etc. Double engine सरकार. ये बोलना नहीं double engine is a bad thing. BJP talks. As an intellectual teacher level, IIM teacher level, they will not like it. This double engine thing is a bad thing which they try to openly say. If you form local government of BJP, then center and this will work together. It will be double engine. If it is not, it will be opposite engine. This is another way of conveying. This is not correct. Every government should get support of center. Center is duty bound to ensure development of the whole country. Sports में भी you have interest? Not. Hobbies? My hobbies primarily lie in playing chess and watching artistic movies. Chess के grand masters, उनके style ये सब कुछ. So, who is the current world champion? D. Gukesh, Domanaju Gukesh. What is his rating? Somewhere around 2500. I'm not sure of the exact number. Which rating is this? FIDE rating. What is FIDE? It's a chess organization which organizes its competitions and also determines who ends up becoming the grandmasters, international master. Okay. Why is Magnus not rated high? Did anything change recently? Magnus Carlsen, I suppose, did not play the last World Championship or last 2 to 3 World Championship. That's why I suppose he has not been rated high or not been rated in the past few matches. And who is the person with highest number of World Championships rating? I suppose it is Magnus Carlsen or either Vishwanathan. I'm not sure of the answer. I can guess. It's Gary Kasparov. Okay. You can say. But if it's your favorite sport, you should know for sure. Who is it? And in what year did computers become better than humans in chess? I'm not sure of the year, but if I may have to make a guess, I do remember that Gary Kasparov was defeated by one of the computer algorithms. I did not know the name, but it was that year around 2000 maybe. That computer algorithm did end up beating the top grandmaster and were considered a better player than Which algorithm? it was some name Blue. I'm not sure of the name. IBM Deep Blue. IIM IBM का Deep Blue. Deep Blue. हाँ, okay. So all these things you would be expected to know, right? When you are मतलब general rule of thumb है, right? Hobby, favorite subject, favorite anything. If you are saying कि this thing is XYZ thing is something which I am interested in, rather than interviewer saying I am interested in knowing this, now you tell. So if push is coming from you, 100% knowledge in depth, level 1, 2, 3, I'll say 360%, 60 degree. has to be from you, because most likely it will not be their favorite subject.
they will be asking some surface level questions, which expert definitely should know, right? So if I know for chess is not my favorite sport by any margin. So if something I am knowing, would expect someone who is interested in that to know as well. तो वी वेरी 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 श्योर, मतलब एक दिन हफ्ते का इसी पे लगा लो कि जो मेरा फेवरेट हॉबी है, फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर जस्ट ask someone who is some maybe a teacher or someone कि grill me on this end to end, ask AI to grill you कि what are some things I would be definitely expected to know. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थोड़ा ना एंथुजियाज्म रखना है, डल डल सी है बॉडी लैंग्वेज, लुक जो है ना चेहरे की, दैट इज शोइंग थोड़ा ना हैप्पीनेस, थोड़ा एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस, जॉय, क्या मतलब ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आ जाएगी कॉल तब एक इंटरव्यू फाइनल करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एकदम रॉक सॉलिड। आपका तो कोई CUET हो गया, जिपमेंट देना है? CUT है 29। हाँ, तो उसको दो, थोड़ा बहुत उसके मॉक्स देते जाओ, +1 में किया हुआ है, +2 में किया हुआ है, मॉक्स दे लो, 2-3 घंटे वो करो, 4 घंटे इस पे लगा दो। ठीक है, चलो शाबाश, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, खुश, एंथुसियास्टिक, खुश रहना। वैसे अगर आपको रेटिंग देनी होगी तो क्या दोगे? 7 और 8 आउट ऑफ 10, इट्स गुड। लास्ट टाइम इट वॉज 7.5 मोटा मोटा, इस बार 8 ही रखूँगा। थोड़ा और जैसे मैंने बताया ना स्ट्रक्चर, और मैं चाहता हूँ, मेरी इंटेंशन है क्या 300% प्रिपरेशन। कहने को मैं इसमें 9.5 भी दे सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू गिव यू 20% लेस सो दैट यू वर्क हार्ड। ठीक है, चलो शाबाश, गॉड ब्लेस, खुश रहो। आपने बच्चे देनी है इंटरव्यू, लाओ CV पीछे आओ। आप तीनों ऑब्जर्व करने के लिए आए हो, गुड। आपने पहले भी दी थी एक बार सिम्बोसिस के, आपने नहीं दी थी है ना, गुड, यू केम ओवर, शाबाश, गुड। आपके कितने हैं IPM में? कम है, 120 कुछ है, 110, 90, बट इसमें आ सकते हैं अपने जिपमेंट में। जिपमेंट के बाद इंटरव्यू नहीं होती, बट अगले साल से हो जाएगा सबका। लग रहा है कि एक टेस्ट होगा, लगता है आगे अगर होना चाहिए कि IPMAT ही होगा, और फिर इंटरव्यूज़ ये लोग आपस में पूल बना के इंटरव्यू के एक नंबर दे देंगे, इकट्ठे लग के आ जाएंगे। देवंश, प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Devin Sirah. I am from Ludhiana, which is the largest city of Punjab. My father is a businessman. He sells uniform to schools. My mother is a teacher. For my academics, I have studied commerce in class 11th and 12th. For my extracurriculars, I am a state medalist in lawn tennis. I was a sports captain of my school for 2 consecutive years. I was also represented India in an international soft tennis tournament in Poland in 2020. So you have very good background and physique for sports. You are representing India till Poland. Why don't you continue your sports journey? Sir, because I feel that it would be quite a financial burden on my family, which, in all honesty, we cannot. Because there are sustain. limited sponsorships. Limited sponsorships as well, and less growth opportunities, and plus there is always the chance of injuries, and a sports career is always an uncertain. तो जैसे इन्होंने बताया ना, टेनिस का काफ़ी कुछ पूछेंगे। करते Be हैं। ready, हाँ, good. Why this program? IIM शिलोंग के लिए करते हैं वो इंटरव्यू, ठीक है? Why IIM शिलोंग IPM? Sir, I would choose IIM Shillong's IPM program, because IPM flagship program, because it would help me to find like-minded people like myself who are motivated and driven, and also curious. बटन प्रेस करना है ऊपर से, ले लो, खुल जाएगा प्लीज। इस साइड से हाँ, वापस ये वाला क्वेश्चन। Why IPM शिलोंग? So I would choose IPM Shillong's flagship IPMAT program,
because it would help me to find a peer group as suit as suited for myself, as they would be driven, motivated, and also interested in the same field as me. I would also get an access to a curriculum which is built by the premier institution of India, which is an IIM. It would include various subjects such as psychology, sociology, economics, mathematics, finance. Thus, I believe it would be the ideal program for me for my future course of action. थोड़ा फैकल्टी का भी देख लेना, बेस्ट फैकल्टी IIM Shillong has the best faculty because the same faculty has been teaching MBA students of IIM Shillong for years, and I have seen the profile of teachers is very inspiring. जैसे एक बंदे का नाम बताना है, पिछली बार भी बात हुई थी, तो आपको नाम बताना है, उसने कहाँ से MBA की है और कहाँ से PhD की हुई है, कितने साल से पढ़ा रहे हैं, कहाँ वो कंसल्टेंट हैं, उनका प्रोफाइल में सब दिया हुआ है। थोड़ा लिंक्डइन पे भी उनका देख लोगे, मिल जाएगा सर। हो सकता है वो आपके आगे भी बैठे। हाँ, इट्स पॉसिबल। अगर आपने सारी फैकल्टी प्रोफाइल्स देखी हैं, कोई आपको अच्छी लग रही है, इट्स पॉसिबल कि वो आपके सामने हो। तो यू कैन से कि सर, फॉर एग्जांपल, आई वेंट थ्रू द वेबसाइट, आई सॉ योर प्रोफाइल एज वेल, देन मतलब जो एक देयर इज अ कैटेगरी ऑफ टीचर्स व्हिच आई वुड नॉट फाइंड इन सम लोकल। so who is Meghalaya's chief minister? I'm not sure. तो बोला था ना करना है जहाँ पे है IIM Shillong, Meghalaya capital last. CM. What is the main source of income of Meghalaya? Where IIM Shillong is situated? How do you commute? How you will commute? Basic inquisitiveness check करने के लिए, basic smartness check करने के लिए, और belief भी check करने के लिए आपकी। सही में आओगे। जय माधव, इधर ध्यान दो। क्या देख रहे थे? IIM Shillong देखने लगे, मेघालय का क्या था फिर? ना बच्चा इधर रहो, फोकस, नहीं तो फिर कहानी वहीं की वहीं रह जाएगी। क्लास में जो लर्निंग हो रही वो भी नहीं होगी, घर जाके पता नहीं कितनी वीडियो देखोगे। तो हाउ विल यू कम्यूट फ्रॉम लुधियाना? ये चेक करने के लिए कि बंदे ने सोचा भी है कि मेरी सिलेक्शन होनी कि नहीं होनी। लुधियाना टू शिलोंग, कॉन्फिडेंस लेवल इनडायरेक्टली। अगर बंदे ने सोचा होगा मेरी सिलेक्शन हो सकती है, तो उसने लुधियाना से मैं कैसे शिलोंग पहुँचूँगा स्टडी किया होगा। How will I commute? How will I regularly go there, come back, etc.? What other options you have? Sir, I have applied for other courses, other IPM courses given by other IIM institutes, such as IIM Ranchi and IIM Indore बोलना चाहिए सर, शिलोंग वाला। रांची बोल दो। Such as IIM Ranchi। क्योंकि अपना कितना है 190। 190, उस पर इंदौर आएगा नहीं। IIM रांची रोहतक का हुआ है नहीं दिया नहीं मैंने। IIM रांची एंड अदर IIM। सर इंदौर में सेक्शनल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है, सेक्शनल हो जाएगा। आ भी जाएगी कॉल तो कन्वर्जन बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। रांची का चांस है, स्ट्रॉन्ग है। रांची शिलोंग का भी चांस स्ट्रॉन्ग है। अनटिल अनलेस दे रिड्यूस कट ऑफ हो भी जाएगी ना बच्चा जी। जैसे हमारे कुछ वीडियो शेयर किया 260 मार्क्स वाला बैठे हैं, हम इंटरव्यू में 10 में से 10 की कोशिश करेंगे, और जब उधर स्कोर ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो you say IIM Ranchi and other IIMs. So suppose you are selected in IIM Amritsar, which will be very near to your math है ना? Yes sir. So IIM Amritsar, which is very near to your hometown, and also at IIM Shillong, which one will you prefer and why? Sir, I would prefer IIM Shillong because of two reasons. I believe that IIM Shillong would provide me more exposure as compared to IIM Amritsar, because IIM Amritsar would be near to my home, which would result in me commuting back to my home quite frequently, which will result in a sense of complacency. हाँ, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, तो ठीक है, पॉइंट्स लाइन ऑफ थिंकिंग। पहला कहो कि IIM Shillong is a much older IIM,
has much higher alumni network, and much higher equity and brand image in the corporate world. समझे? ये ज़्यादा बात है. फिर सेकेंडली कैम्पलिसिटी की हमने वीक आंसर क्यों देना? How is Devan as a person? Sir, I believe Devin as a person is a motivated and disciplined person, which can be seen through my lifestyle, which incorporates sports. I believe I am also a leader, since I was the sports captain of my school. Favorite subject? Favorite subject is economics. आप लोग कोई फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? जय माधव, आप पूछ सकते हो कुछ अच्छे क्वेश्चन? अच्छा, पूछो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन. इधर आ जाओ. वो बैग नीचे रखो, ये वो ले लेते हैं. अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो पूछना इकोनॉमिक्स के. फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. What is? Good, very good. Repo rate is the rate at which Very good. Repo rate is the rate at which the central bank lends money to the commercial banks for their short-term needs. What is India's repo rate like? I'm not sure. Okay. When RBI wants to increase liquidity, Increase liquidity. will it reduce or increase the repo rate? It will reduce the repo rate. Okay. How it will affect? Sir, if they reduce the repo rate, so that means the borrowing costs for the commercial banks would decrease from the RBI. Thus, it will promote borrowing from the RBI. What is SLR? SLR is statutory liquidity ratio. What is the current? वो नहीं याद होगा, पढ़ लेना. ये सभी लोग पढ़ लेना गुरुजी. मैं अच्छा हुआ, वेरी गुड पॉइंट. रेपो रेट, रोल ऑफ आरबीआई से भी, दीज आर वेरी फेवरेट क्वेश्चन. और इसमें आज की पूछ लेता है, 80% चांस है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी हो, स्पेशली व्हेन यू से इकोनॉमिक्स. How is repo rate and inflation related? Repo rate is used by the central bank to control the money supply in the economy through the commercial banks, and if there is larger money supply in the economy, so it will lead to more people purchasing, thus it will lead to a rise in inflation, and vice versa. If the repo rate is higher, so it will discourage the commercial banks from from borrowing from the central bank, thus reducing money supply in the economy, and thus level of inflation will be lesser. Why SLR is there and it's very high? Normally I think maybe 16-17 होगा. Why it is there? Sir, What is the logic behind it? And what is CRR? So CRR is cash reserve ratio. What is the logic behind CRR? So the logic behind CRR is that the commercial banks should keep a certain amount of cash with them at all present times. It is a certain amount which is specified by the RBI. This enables the commercial bank to meet the demands of the public for lending, as well as when people take out the deposits. Agreed. So similar is the concept for SLR. SLR. It is the net demand and time deposits that commercial banks are required to keep at central bank. NDTL is separate. This is a percentage of NDTL, 16-17%. Net demand time liabilities is a big thing which is calculated through a tough formula. All these ratios apply on that.
So that is okay what you are saying 16. Why it is kept like that? Because sir, the central bank should the commercial bank should also keep money with the central banks. Anyone else? Why? What is the concept? Why RBI wants such a big amount of money, 16-17%, kept under statutory Liquidity. government securities, bonds, etc. Very good. Excellent. If number one, it wants, RBI doesn't want that the full amount available with the bank it uses to lend. So that is why it wants some of it to stay in the form of SLR, statutory liquidity ratio, government funds, government securities and bonds, which can be in cash any day and are secure investments, plus CRR. So taken together they will be around 20%. So it is a risk mitigation strategy of RBI under Basel norms. अभी उसके बाद जाओ, बेसल नॉर्म्स का फॉर्मूला होता है ये एसिड दिस रिस्क asset risk ratios etc. are there. Like gold will have 0 risk, then some other type of assets will have 25%, then other will have something other way around. High risk weighted assets, gold will have say least. So उसका निकाल के एक फॉर्मूला निकाला जाता है. So both these things are such where the risk asset ratio is minimum. So RBI wants the bank should have money with it, so that if any day a big demand comes from its people who are kept savings with it, it doesn't say कि मेरे को पैसा नहीं है देने के लिए. Cash CRR is also in the same line. This is also in the same line. So what happened with HDFC Bank recently? I'm not sure on this, but I think I'm not sure. I think their last quarter earnings or quarter 4 earnings. Their chairman resigned, citing उसके कारण some philosophical and ideological differences. He resigned. Next day, share price was down 8%. 8%. This is fairly recent. Happened, I think, almost less than So a month ago. please keep tracking what has been told to you. Economic times को भी डाल दो. क्योंकि economics है ना, यार economics है तो economic current affairs में this is most important. जो अभी हुआ इंडिया में. HDFC was over leveraged on some risky assets. There were some offshore investments which did not turn out to be lucrative. As a result, investors lost money. This person resigned because he thought HDFC should not have been invested in first place. And RBI had to come and issue a statement because it's one of the too big to fail banks of India. Which are the too big to fail banks? Do you know? There are 3. in India. Yes. Good question. Must be ICICI, HDFC, and HSBC, I think SBI. SBI. So now next top, this is very important. Learning क्या मिली? 4-5 times economic times सर्व करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया को सर्व करना है, ट्रिब्यून इंडिया को करना है. ना कितना है दवाई ना खाती एंटीबायोटिक तो इन्फेक्शन उतनी रहनी है. नहीं होएगा कन्वर्जन. You are very close to getting into NI. They have spent energy in checking your test. They will spend energy in giving you a call. They will spend energy when you go there to give an interview to check your documents. They will spend energy to make you write a essay. They will spend energy to see that essay. They will spend energy to take your interview. They will spend energy to compile your results. So they want to check you they want seriously to take you in. Now it is your seriousness. If it is lacking, नहीं होएगा. We have no other option. I am telling you again and again. जो पब्लिक आपकी कॉम्पिटिटर है वो 5 MUN कर चुकी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इंटर्नशिप कर चुकी है,
ऐसी पब्लिक है मिनिस्टर के साथ कर चुकी है इंटर्नशिप, जब मौका मिला आरबीआई में जा चुके होंगे किसी कनेक्शन के थ्रू, एसबीआई में कर चुके होंगे हेड ऑफिस में। हम कहाँ हैं? और यही थोड़े दिन में रेज करना लेवल, तभी वहाँ सिलेक्टेड कॉल्स में आएगी फोटो, नहीं तो कॉल की कोई वैल्यू नहीं है। कॉल तो बस याद करेंगे आई हैड रिसीव्ड ए कॉल, नो वे, इट विल नॉट मेक इट। So now the next topic we are going to discuss is 99% चांस है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपको ये यूज हो जो क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क। और इसके अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनमें से कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए हैं, देखते हैं अब क्या निकलता है। योर व्यूज अबाउट विकसित भारत बाय 2040। Sir, my views on Viksit Bharat till 2040. I would say, sir, that if the current geopolitical situation remains the same, then it would be difficult to achieve the set goals by 2040. कहानी खत्म होगी यहीं पे। पेसिमिस्टिक, नॉट ऑप्टिमिस्टिक, नॉट पॉजिटिव। 10 में से 2 नंबर पे अब यहीं आ गए। अब आगे पता नहीं वो कितना टाइम आपको देगा और बोलने का नहीं। क्यों भाई, हमने क्या लेना जियो पोलिटिकल। सर वो अब ये कृपा करके सब लोग सुन लेना ध्यान से, जो यहाँ सुन रहे हैं वो भी, जो वीडियो सुनेंगे वो भी। पुरानी वीडियोस में भी ये है सब कुछ जो आई एम गोइंग टू टॉक नाउ। दिस इज व्हाट मोदी नीड्स टू बी गाइडेड। मोदी को भी आई सेंट suggestions, Sitaraman also, but they follow very less. Where we should start? Origin of topic, आज, background, etc. वो आपने नहीं किया, सीधा फ्यूचर में चलेगी, वो भी नेगेटिव होएगा नहीं। क्या भाई लेगा वो आपको? नहीं। ये तो दुखी मुंडा है, आगे कहना इंडिया का कुछ नहीं होना, जो पोलिटिकल से फंसा हुआ इंडिया का। क्या भाई, कितना इंडिया का शेयर इन द, लेट्स टॉक सम 4-5 मेजर नेगेटिव्स ऑफ आवर इकोनॉमी नाउ। वहाँ से ओरिजिन करो, पॉजिटिव भी कर लेंगे, नेगेटिव भी कर लेंगे, जैसे हमने पिछली बार बात की, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। सो लेट्स टॉक ओरिजिन ऑफ, आप उसको नहीं बोलोगे ओरिजिन ऑफ, यू विल स्टार्ट इट इन दिस वे। सर योर व्यूज अबाउट इंडियन इकोनॉमी कह लो, उसमें ये सब आ जाएगा जो भी हम बात करेंगे। योर व्यूज अबाउट विकसित भारत 2047, your views about how India 2050, your how do you see the future of India, etc. सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये यूज हो जाए। एनी करंट अफेयर्स यू हैव बीन फॉलोइंग, ठोक दो उसमें, ले आओ अपने उस स्ट्रॉन्ग जोन में बॉलर को जहाँ से आप चौके छक्के लगा सको। इफ दे आस्क यू एनी बिजनेस व्यूज, एनी लेटेस्ट न्यूज यू हैव फॉलोड, कह दो हर जगह मोदी बोलता रहता है 2047, तो इट हैज बीन ए रिसेंट न्यूज। Recent meeting he had with the group of minister, 4.5 hour meeting after coming back from his foreign trips. It was shared that he has told them to focus on Viksit Bharat by 2047. वहाँ से पकड़ लो, करंट न्यूज़ में पकड़ सकते हो, बिजनेस न्यूज़ में पकड़ सकते हो, इतनी जगह पे ये यूज़ कर सकते हो जो अभी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। एंड इट विल बी गेम चेंजर फॉर एनी इंटरव्यू सक्सेस, इवन इन योर college discussions, participations. You will be seen as an intellectually intelligent person by your peers, by teachers, everyone, and later on by corporates. Now, Viksit Bharat, sir, I just read Mr. Modi did a meeting with the minister. My view on this is India's strengths, which can help us in achieving these are: number 1, demographic dividend. We are a young economy where 85% people are below the age of 35 years even today, and it is going to be a very strong positive for India to achieve this Viksit Bharat. Number 1. Number 2,
At present it can be seen as a strength, but I would like India to improve on this in days to come. India is a self-sustaining and self-consuming economy. वंडरफुल स्टेटमेंट। लगा दी तो 6 रन या 12 रन मर गए यहीं पे एक ही बॉल में। 9 बॉल पे छक्का, फिर अगली बॉल पे फिर छक्का, वो है ये पॉइंट्स। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया हैज ह्यूज एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक वेयर द अदर इकोनॉमीज लाइक जापान द एज ऑफ एवरेज एज इज अबाउट 55 years now. Almost 80% of population is about 60 years in Japan, the other big economies. India has an advantage. 85% people are young, less than 35 of age. Demographic dividend. Secondly, self-sustaining and self-consuming economy. Sir, this point can be seen in a positive way also, in a negative way also. When there is a geopolitical, when there is a problem in the world, this at present is helping us, because we don't get affected by the world economies in a big way, because our share in the world exports is just 3%. Share of India in world exports today is just less than 3%. China is around 18%. China. So it is when there is a turmoil in the world scenario, it helps us. But I would like the country to improve on this. Our share slowly should improve. आपने पॉजिटिव भी बोल दिया, इसका नेगेटिव भी बोल दिया. सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी. 2008 रिसेशन आया, पूरे वर्ल्ड की वाट लग गई, इंडिया की वाट नहीं लगी. इंडिया में क्या आया? स्लो डाउन. 5.56% GDP growth when the whole world was in recession. Why it happened? Because उस टाइम ये फायदा हो गया कि हम वर्ल्ड पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे. सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, ये वर्डिंग ऐसे में यूज़ कर देना, राइटिंग असेसमेंट टेस्ट में या इंटरव्यू में कहीं बोल देना, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी. बिग मार्केट, वेरी बिग मार्केट, इसी से लिंक्ड है, वेरी बिग मार्केट. 3 बड़े पॉजिटिव्स, इनको आप कैपिटलाइज करो. और अब आ गया आपके नेगेटिव्स. इसी में बोल दिया थोड़ा सा नेगेटिव कि जस्ट 3% है तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम है. दिस शेयर शुड गो फ्रॉम 3% to 10-15%. देन आवर import exports will be managed. The trade balance will become neutral or positive. That should be the goal. तो वो उसमें एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाना चाहिए, फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट्स. अब आ जाता है on the other side, which are the points which are limiting us, negatives. R&D, lack of R&D, lack of research and development, focus, impetus by government and Indian companies. समझे बात? Here you will give examples of, sir, if we look at 90% of the gadgets we are using in this room, like this laptop कोई पड़ा होगा, it's from Dell, US company. My phone is from Chinese company. Sir, your phone may be also from some imported company, USA or China, etc. So I think here, why there is no HCL, Hindustan Computer Limited's laptop or improved this hardware for computers? Why there is no Indian local made mobile phone? Such huge billions worth market, we are giving this profit and royalty, design royalty, product royalty, ये सब वो लेके सब निकाल के ले जाते हैं इंडिया से प्रॉपर्टी, सैमसंग एक्सेट्रा. मैनेजमेंट रॉयल्टी 20% जो प्रॉफिट बना, प्रोडक्ट रॉयल्टी इधर, R&D सपोर्ट का रॉयल्टी 15%, जो बाकी बचता है सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है इंडिया. Why not we have? So our huge impetus needs to be given on R&D and all, and NEP, new education policy should be implemented
in reality and making our education system such that there is innovation, there is creativity, there is R&D, there is industry driven curriculum which is taught in the schools and colleges. ये दो करो बल्ले बल्ले आएंगे. गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्कीम दी. I have been following government from last 30 years. Touch wood with very good prediction level, very good understanding of rupee, many things. Government gave good incentives, that was performance linked incentive, PLIs or something it was called, performance linked incentive, for more production of mobiles, for more production of semiconductor, for certain items. If you produce above this quantity, you will get some special incentive. Now that incentive, those were good for improving production, make in India, but design and make in India is critical. So NEPs का R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, क्रिएटिविटी फोकस, और ऐसा पढ़ाना स्कूल्स में जो आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, सिक्स सिग्मा, IPM, TQM, जो डाटा एनालिटिक, बिजनेस एनालिटिक, ये आपको स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, फिर आपके कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो बल्ले बल्ले करोगे. और एक यहाँ जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज हैं उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब्स 40 years old, करिकुलम 40 year old, बुक्स में वही सेम पुराना बन रहा है. आज के दिन में जो नई ऑटोमेशन आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो कहाँ है? तो उसको भी फोकस ये होना चाहिए, इनोवेशन, R&D एक्सेट्रा. मोटा मोटा ये करके इंडिया हैज ए स्ट्रेंथ, आयरन ओर, coal, coke, minerals, that is ferromanganese, ferrochrome, nickel, which are used for making steel, etc. Most of them are available inside India. We don't need to import like China. और एक ड्रॉबैक है जिन पे काम करने वाला है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आज के दिन में इंडिया में अगर किसी ने लोन लेके पैसा बिजनेस चलाना हो, 14% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है. इन थाईलैंड इट इज़ अराउंड 4 to 5, चाइना इट इज़ 4 to 5, फिलीपींस इट इज़ 4 to 5. इफ इट इज़ यूरोपियन लोन यू गेट इट गोज अप टू इवन 3%, 3 times मोर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वो सब चिल्ली पिल्ली पॉइंट है, मैं 1 रुपये वाले पॉइंट मैक्रो बताया. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज पॉजिटिव. Self-sustaining and self-consuming economy can be a boon sometimes, can be a curse sometimes. When there is a turmoil worldwide, India benefits, but our share in the global market is, export market is just less than 3%. China. अब बोलोगे कैसे, रेफरेंस किससे दोगे? जब तक रेफरेंस नहीं दोगे उसको 10 में से 10 वाली सिलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे आप. साथ में बोलो, वो कहेगा 3 है, चलो उसको भी नहीं पता होगा प्रोफेसर को, जरूरी बात नहीं है. और जब आप साथ में रेफरेंस होंगे, चाइना इज 18%, वो समझेगा 6 गुना है भैया हमारा कॉम्पिटिटर, हमारे जैसा, जो आज से 40 साल पहले हमारी जैसी हालत में था, डेवलपिंग इकोनॉमी. कहाँ चला गया चाइना? सो डेमोग्राफिक डिविडेंड, सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, वेरी बिग मार्केट, lot of infrastructure still needs to be developed. तो इसमें ये ध्यान रखो, भले यूरोप हो, अमेरिका हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, वो आज से 15 साल पहले अपने सैचुरेशन पे पहुंच गए थे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. हाईवे बन गए, ब्रिजेस बन गए, ट्रेन के नेटवर्क बन गए, प्लेन के एयरक्राफ्ट, ये एयरपोर्ट्स बन गए. अब उनकी 80% कंजम्पशन होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस. भले वो इटली हो, स्विट्जरलैंड हो, कोई भी कंट्री बड़ी हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, डेवलपिंग कंट्री में सब अभी बनना है. कहाँ, मैंने बोला ना रेल नेटवर्क कहाँ है, लुधियाना में कहाँ है मेट्रो, लुधियाना छोड़ो, पुणे में कहाँ है, पूना, बेंगलोर, इतना ट्रैफिक कंजेशन है वहाँ, एलिवेटेड ब्रिजेस बन के मेट्रो इमीडिएट चाहिए बेंगलोर में. तो वो चाहिए तो फिर उसके लिए कितना वो सरिया लगना है, कंस्ट्रक्शन होनी है. वी हैव ए ह्यूज ट्रैजेक्टरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल नीड्स टू बी डेवलप्ड, विच मीन्स
much more steel consumption, much more cement consumption, much more GDP growth. तो ये 3 अब 4 पॉजिटिव्स हैं जिनके कारण लगता है। और 5वां ये आयरन ओर, कोल, कोक सब मिनरल हमारे पास है। तो इंडिया कैन डेफिनेटली अचीव विकसित भारत। आई थिंक एरियाज वेयर वी नीड टू इम्प्रूव इज वी शुड इम्प्रूव अवर शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। दैट विल एग्जांपल ही दे दो, दैट विल हैपन व्हेन महिंद्रा एंड महिंद्रा विल स्टार्ट सेलिंग व्हीकल्स टू यूरोप, नॉट जस्ट थर्ड वर्ल्ड मतलब नॉट जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, Bhutan, Vietnam. When Mahindra and Mahindra's vehicles will get sold in big numbers worldwide, in Europe, America, big advanced economies, where we will start competing with BYD internationally, that is the day we will become विकसित भारत। और अभी तो टाटा अपना लोकली मार्केट को नहीं सर्व कर पा रहा। लोग जाते हैं टाटा की वजह से वाइब्रेशन होती गाड़ी के अंदर। आई टुक ए ट्रायल ऑफ सफारी 30 की स्पीड में फुल ऐसे वाइब्रेशन। So just 20,000 किलोमीटर ड्रिवन व्हीकल। आई टोल्ड देम कि तो आप ट्रायल की गाड़ी में देखो इतनी वाइब्रेशन। मेरी वो जाइलो है उसमें 16 साल पुरानी, उसमें नहीं वाइब्रेशन इतनी जितनी है 110 100 पे आती है, इतनी जितनी आपके यहाँ 20-30 पे आती है। आई स्टार्टेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टाटा लोकल व्हीकल 4 व्हीलर। जैसे स्टार्ट किया ट्रैक्टर जैसी हमिंग वाइब्रेशन, अभी गियर में नहीं डालना, मतलब फॉरवर्ड में ड्राइव में नहीं डालना, इंजन को सिर्फ स्टार्ट किया। ऑटोमेटिक है इसलिए उसका इतना काम है, इतनी वाइब्रेशन। यू गो टू Hyundai i10, immediately got no vibration in the cabin, good smooth cruise control everything। क्या है इसमें, क्या है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। हम रॉकेट बना के DRDO मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा डिफेंस में फोकस अच्छा है, मिसाइल्स अच्छी बना लेते हैं, रॉकेट अच्छे बना लेते हैं, ये सब कर रहे हैं। वहाँ साइंस लगा रहे हैं, वहाँ दिमाग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ जो लैब्स चाहिए, आप टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स करो जर्मनी के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ, जर्मनी के बेस्ट ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर्स के साथ। यहाँ पे खोलो वो ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया। और महिंद्रा इनसे भी लो 2-2 हज़ार रुपये आप डालो, 2-2 हज़ार करोड़ आप डालो, 10,000 करोड़ सरकार डाल दी, या 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ का हमने ये ऑटोमोटिव रिसर्च हम बनाया। बनाओ गाड़ियाँ बेहतर करो। सिमिलरली IT में ये HCL इनको करो, 3-4 को भी तुम ज्वाइन करो हैंड्स, वी विल मेक गुड लैपटॉप इन इंडिया, व्हाई नॉट। जो लाना चिप इंटर ले लो, इधर से करके जोड़ो अपना बनाओ। मोबाइल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के जो मास्टर हैं दे शुड डू। TV LED सोनी, सैमसंग, LG, कहाँ इंडियन प्लेयर, क्या है लोकल दिल्ली असेंबली करके लोग बेच रहे हैं लगातार। इतनी बड़ी मार्केट है, सब फ़ायदा चाइना से लाते हैं चीज़ें, वो असेंबल करते हैं, बेचते हैं। तो यार कोई बड़ी कंपनी नहीं लगा सकती इसको। R&D, गेटिंग माई पॉइंट, R&D इज टू क्रिटिकल। लास्ट बजट, अब ये बोल दिया, ये एक और चौका छक्का है। इन द लास्ट बजट गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 20,000 करोड़ फॉर R&D सपोर्ट, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। मैं इनको 7-8 साल से लिख रहा था ये पॉइंट, R&D, डू समथिंग, invest on it, make this PPP model, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर ये बनाओ टेक बंदे ले आओ, इंटेल से, गूगल से, उधर से माइक्रोसॉफ्ट से, हायर देम, गिव देम 10-year contract, they will love to be working for India, they will use the brain they are using there, they will use for India। make a very big tech center, R&D tech center in NCR or big, anywhere where you feel we should have 4-5 dimensions: agriculture tech, R&D, automotive, electronic, communication, मोटे मोटे 4 ही पढ़ो। अरे आपको हैरानी होगी, 3M का जो हम ये यूज़ करते हैं कार वॉश, इट इज़ इम्पोर्टेड। 80% ऑफ अलॉय व्हील्स इन इंडिया आर इम्पोर्टेड फ्रॉम कोरिया, ताइवान, चाइना। हम अपने अलॉय व्हील भी नहीं बना रहे, एक केमिकल नहीं बना पाए, केमिकल का छोटा सा वाटर, ये कार क्लीनर नहीं बना रहे, 3M का छाया हुआ है। हमको कॉन्फिडेंस भी उसी पे है, क्योंकि उसको जब हम यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक वैक्स लग जाती है। इंडिया का कोई प्रोडक्ट नहीं, क्या R&D, केमिकल, 5th आ गया केमिकल लाइन। ये लाइन्स आपके दिमाग में होनी चाहिए एज यू, समझे। ये 100 चीज़ें मैंने बताई हैं, 100 में से 4-5 भी अच्छे से विद फिगर पता है। अभी एग्जांपल के साथ, सर
Unfortunately, we are using car wash from 3M, which is imported. A country like us should have 10 car wash competing among them. Carboner, ये सब imported है. मैं देख के हैरान होता हूँ. Marketed and by this marketed and distributed under license from USA. कंपनी का नाम लिखा होता है कार्बोनर, कार्बोवैक्स और ये तीसरा 3M. कहाँ है इंडिया? जब स्टार्ट कर हाँ. रहे हो ना आंसर तो डोंट स्टार्ट एज अ ब्लैंकेट कि आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू डू इट हाँ. या फिर आई थिंक वी विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा नहीं. मतलब अगर यस नो आंसर होता तो दे वुड प्रोबेबली नॉट आस्क दैट. मतलब आप अटेंशन जो है सामने पैनल की उसको रिटेन करके रखोगे एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग डेटा, यू आर प्रोवाइडिंग पॉइंटर्स जो शार्प हो, and then you are giving very nuanced, balanced answer at the end. देखो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को देख के this is the scenario, this is what I feel can happen. But जब आप start में ही बोल दोगे ना कि I don't think this is good because ये या जो भी है, फिर थोड़ा ऑलरेडी पैनल डिफेंसिव हो जाएगा. अगर कोई है इस माइंडसेट से कि इंडिया विल बिकम विकसित भारत और आपने बोल दिया नो है, तो वो पर्सन ऑलरेडी होल स्कोप करने लग जाएगा आपके आर्गूमेंट. आप पहले डेटा प्रेजेंट करो, फिर आप एंड में कंक्लूजन दे दो. देखो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस मेरा ओपिनियन ये है. अलार्म नहीं करना हमें सामने जो बैठे लोग उनको बाई गिविंग ब्लैंकेट आंसर विच इज़ नॉट डेटा बैक. आप लाओ डेटा, बताओ देखो ये 4 चीज़ें मैं कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस माइट हैपन, दिस मे नॉट. फ्लैट आंसर्स नॉट. ये बिग पुश फॉर R&D इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा पॉइंट हो सकता है विकसित भारत में कहीं पे भी. अब इसमें जैसे ही आपने एग्रीकल्चर में बात करनी, मैं भूल गया था पीछे भी एग्रीकल्चर सबसे पहले आएगा. क्यों? क्योंकि आपका इफ इसको रेट करो, इफ यू वांट टू इम्प्रूव अवर पर कैपिटा रैंक फ्रॉम 134 टू इन द टॉप 10 और 20, आई थिंक दैट इज अ डे. स्टार्ट भी यहाँ से कर सकते हो. Sir, today our per capita income rank is 134. I think I will be more than satisfied with India being a Viksit Bharat. India can be said, यहाँ से कहते हैं sir, India can be said to be a Viksit Bharat if in per capita rank we come in the top 10 or 20 in the world. ऐसे आप अपने डिफाइन करो, आर्गुमेंट स्टार्ट करो और फिर आप ऐसे बताओ कि इन फॉर दैट एग्रीकल्चर वेयर almost 60% of our population is directly, indirectly employed. Over there, almost 84% farmers are marginal or small farmers with less than 4 acre of land holding, whose income is less than 15,000 per month. If I don't work on them in a big way, I cannot make India Viksit Bharat. Because that is 60% of my population. तो इफ आई मेक देयर इनकम्स इंक्रीज, तो फिर हमारा जो आया फूड प्रोसेसिंग, कैश क्रॉप्स, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड ट्रेन्स, कोल्ड व्हीकल्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, गाइडेंस, टैक्स सपोर्ट, सब्सिडीज. अभी कल ही मैंने पढ़ा कि मैंने शेयर करने वाला था ग्रुप में, आई विल डू इट लेटर ऑन. यहाँ पे फुलावाल विलेज में कोई सेफ्रन फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया. सेफ्रन इज सपोज टू बी डन इन जम्मू कश्मीर इन ए डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, टेम्परेचर. उन्होंने यहाँ पे स्टेप्स में करके इन्वायरमेंट वैसा ब्रिक्स वॉल से बना के, ब्लोअर्स लगा के, कूलिंग अरेंजमेंट करके वो कर दिया यहाँ पे सेफ्रन. दे आर एबल टू प्रोड्यूस फ्रॉम वन, आई थिंक some investment of say 40-50 lakhs, they are able to make now already 30 lakhs per annum. और ऐसे कई प्रोग्रेसिव फार्मर्स के एग्जांपल्स हैं. स्टेप्स में मशरूम फार्मिंग हो रही है, बटन फार्मिंग है, वो दैट इज प्रोड्यूसिंग आई थिंक 10 lakh और 15 lakh पर एकड़ एज कम्पेयर टू वीट राइस से जो उनको चरों बहुत कम 40-50 हज़ार रुपये पर एकड़ मिलता है. तो दैट इज द वे फॉरवर्ड. सो Sir, I think Viksit Bharat, I will consider India when we come in the top 10 or 20 in terms of per capita income and from our current rank of 134. For that,
the 60% population which is employed in agriculture directly, indirectly, their incomes have to improve. Out of which around 60, 86, 4 हो गया, so almost 40, 50 crore people are earning less than 50,000 per month. Until I work on them to improve their incomes, I cannot achieve Viksit Bharat. Plus automobiles, R&D, electronic R&D, communication R&D, chemicals, सब पे आपके पास एग्जाम्पल है. सो पॉजिटिव भी हैं जो हमें हेल्प करेंगे, बट वी नीड टू वर्क ऑन दिस. वो कहेंगे यार ये मुंडा ਵਧੀਆ जी ਇਹਨੂੰ ਲਓ ਜੀ, ठीक है, हो गया ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ मोदी ਨੂੰ ਹੀ सिखा पाए. दो पॉइंट तो बोल दो, ऐसे में लिख दो, ऐसे आपसे पहले पहुंचा होगा, उन्होंने गो थ्रू किया होगा जब आप इंटरव्यू देने आओगे. अगर ऐसे से अच्छा इंप्रेशन बनाओ, आपकी इंटरव्यू एक अलग तरह की चलेगी, एक अलग टेम्पो में चलेगी. दे वुड हैव ऑलरेडी फ्रेम देयर माइंड टू योर ऐसे, ये बंदे में दम है. 10 मिनट चलेगी, 10-12 मिनट अच्छे नोट पे चलेगी. उल्टू पुल्टू ऐसे लिखा, नेगेटिव लिखे, ये लिखे, उनके दिमाग में जैसे आगे फ्लैग हो गया नेगेटिव माइंड सेट, फिर उस हिसाब से वो ग्रिलिंग करेंगे और स्ट्रेस देंगे और आपको ग्रिल करेंगे कि आपके अंदर से और नेगेटिविटी निकले, वो रिजेक्ट करो. माइंड में आ गया कि नेगेटिव बंदा है, चेक कर दिए, गलत बंदा ना आ जाए. यू गॉट इट? ऑल द बेस्ट. और जिसमें डेटा प्रोवाइड, हाँ, बुलेट पॉइंट्स, कोशिश करो, डेटा बैक कर दो, Figures. कोई भी चीज़. उस पर ना फिर कोई डिबेट नहीं है. जो डेटा है वो तो है ना, सेट्स यू अपार्ट. जो फैक्ट ये है सब वो- मैं ले जाऊँ. हाँ जी. जय माता जी, आइए जरा. अभी काफ़ी कुछ हमारा हो गया, अब एक बार एक प्रैक्टिस है, इसके बाद एक और फाइनल करेंगे जब आ जाएगी. जय माता दी. आप पढ़ रहे हो दोस्त इधर ही? अच्छा, आपका ब्रांच कौन सी है आपकी? पीसीएम वाला में और नहीं है? तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is IIM Indore. I come from Punjab. I've done my 12th with IPM from an international curriculum courses. And my father is a businessman involved in manufacturing and export of engineering goods. And my mother is a homemaker. Outside academics, I've been very involved in extracurriculars like हाँ, इसको outside academics. I've been very involved in extracurriculars such as MUNs. I've represented Punjab in a national level debate competition. I've won MUNs as well. I play the guitar. I have a grade 5 level certification from Trinity College London. I was football captain of my school team and I was a starting goalkeeper as well. And on top of that, I've also co-authored and published the research paper in Taylor and Francis Online. I wish to do IPM. So कौन सा IIM का कर रहे हैं अभी? IIM Indore. I wish to do IPM from IIM Indore because I believe that this program would actually provide me the opportunities that I need to propel me further in my career and actually achieve my goals. अभी एक चीज़, I feel the way you fought with that illness is your USP. Okay. And even when this guy left and Yuvraj Singh fought it, people won over it, everyone respects them for that. So you can mention it in the beginning. Okay. Here you don't mention the illness. You say over there you mention, yeah, when I was in this class, unfortunately I developed this, and with God's grace and with my parents' support and with my resilient attitude and fighter attitude, I am able to overcome it. That way. Yes, sir. And now and post that, and you can, अगर उन्होंने नहीं भी पूछा अपने आप ही बोल देना. Because when I was in 12th, the problem was at peak. I was going through this, and that's why my marks in the +2 suffered. But you will appreciate after that, I have scored very well in my IPM, and I have now been able to, do well at least in this competitive test, and I am here for an interview. So they can ask you, are you over it? So you share what is the status, and now within few months it will be totally over. It is a USP for you, Okay, sir. where it gives them empathy and it
tells them कि you are a fighter. Okay, sir. उसके बावजूद आपने IPM किया, IPM में अच्छे नंबर भी लिए, so that's how I have come here for an interview. यहाँ आ जाए ये इंट्रोडक्शन के बीच में तो गुड, नहीं आए वो कहीं पूछ ले मार्क्स के कारण वहाँ ले आना, नहीं तो वो पूछे योर स्ट्रेंथ्स ओवर देयर यू मेंशन कि सर आई थिंक बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मी आर आई डोंट गिव अप इजीली, माय रेजिलियंस, दैट इवन इफ आई फॉल डाउन ऑन समथिंग आई bounce back and bounce back strongly. So these are my strengths. Like I throw arm problem. It will give you additional. My experience tells me it will give you additional 3-4 marks, 30-40 marks extra because of your background of a fighter. ठीक है ना, और ये भी उसको कवर कर देंगे. चलो चलो आगे चलते हैं. तो now why I am Indore IPM? So because first of all it is the oldest and most established IPM program, and it really focuses on building a foundation in the first 3 years. There's a social entrepreneurship, social internship, sorry, at the end of the 2 years, and then there's a proper industrial internship at the end of 4 or 5 years, along with the project at the end of the 3rd year, I believe. In the first year, in the first semester itself, you can quote if it is not mentioned on their website. They send students on the weekly off day. Thursday होता था off, किसी भी off day में they used to send their students to nearby schools Okay. to teach the underprivileged villages, to teach the underprivileged kids there. So I've also done that as an extracurricular. Very good. So why IPM you can mention. Okay. Then you mention like this, and I have already been doing similar thing, which tells me that my values and my background, my values match with the values of IIM Indore. Okay, sir. And I think that is very important and good aspect of the program. वेबसाइट पे भी है. होएगा तो I help बोलते हैं उसको. Okay. वेबसाइट में दिया तो वेबसाइट कोड कर दें, नहीं तो एलुमिनाई बैठे हैं. Website I met में with a senior from my city. He is a IIM Indore alumni. You can quote him also. Okay. Some of the things. Okay. एक तो क्या बोला करिकुलम के डेवलप गुड फाउंडेशन ओल्डेस्ट IIM है जिन्होंने IPM स्टार्ट किया. Internships. ये सब अच्छा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं एंड करिकुलम बोलना जरूरी है. इट इज़ अ मिक्स ऑफ आर्ट्स. इट्स अ वंडरफुल मिक्स ऑफ आर्ट्स, mathematics. एंड मैनेजमेंट Okay. प्लस लाइफ एट IIM. और फिर फैकल्टी, ये लोग फैकल्टी माय डियर, इफ यू मेंशन फैकल्टी of course you get good soft corner in their heart. Yes, sir. It's a respect you are paying to them. Where I think I am Indore's faculty is also class apart as compared to what I will get in other graduation programs. Many of your alumni, most all are from top B schools. They are consultants. He is now telling you, many of his teachers in IIM Indore were consultants to this DPIO companies, etc. On their off days, they go and give consultation. People send them data, हमारी ये problem है, help us in marketing issues, operations issues, etc. So studying from such people who are consultants to Government of India in policy making, who are consultants to top companies, who have very good background in academics, I think that is one thing unique in this program. उसको भी mention करना. Okay. ठीक है, याद रखना टीचर का जरूर बोलना है. टीचर होते हैं इंटरव्यू. Sir. और वहाँ मैंने एक बार फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जब IIM Indore की इंटरव्यू के लिए जाओगे, मोस्टली वे बनता में होगी गुड़गांव में, कहीं पे भी डेली बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखानी है. ऐसे लेटे से बैठे हुए ये वो मूव करते हैं टीचर, वहीं पे भी इंप्रेशन पड़ जाता है. बाहर बैठे होंगे जब 3-4 लोग आपके वेट कर रहे होंगे आपके साथ, आपने फालतू कोई बात नहीं करनी. चुल्ली बुली छोटा मोटा बात कर सकते हो, वी आर आरिंग फ्रॉम, क्या कर रहे हो, कैसे है. ज़्यादा ना सुननी है किसी की, जो बाहर आया ना ही करनी है. वो पूछते हैं, सो व्हाट पीपल आर टेलिंग अबाउट अस एज अ पैनल, और तो सर आई डिड नॉट डिस्कस. वो कहेंगे यू डिड नॉट हैव एनी क्यूरियोसिटी, तो आप कहना सर आई डिडंट वांट टू गेट बायस्ड बाय हियरिंग समवन एल्सेस views about this. I would like to form my own opinion by this. This is the way I think. More logical and logical, clear, smart answers. चलो आगे चलते हैं. तो why IPM में याद रखना, अब इसको बार बार सुन लेना वीडियो,
Okay, तो sir. ये नहीं मुझे कहना कि थोड़ी जी सुनी है, ये थोड़ी सुनी होगी, थोड़ी जी सिलेक्शन होनी है, वेट लिस्ट आना है। जो पूरी खीर खा ली, ये जो इतनी बताए हैं पॉइंट्स और आपके वो 427 करके गए, कोई पावर नहीं है इस अर्थ पे आपको रोक। अभी भी इस साल भी एक बच्ची का 96.6 पे IIM लखनऊ हुआ है जनरल कैटेगरी, 92.93 पे और विंडो से IIM इंदौर हुआ है जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन, यहाँ से हमारे टू जाना। इतने नोट्स होते थे उनके, ये सब उसका जूस है, नेक्टर है जो आपको दे रहा हूँ। इतना मोटा रजिस्टर भरा जाता है करंट अफेयर्स में। तो आपको ये जो बताया जा रहा है, जो वीडियो देखी है, दे आर, और वो 426 क्वेश्चन इनको लगा डाला, लाइव सिंगल आना, फिर कुछ नहीं आया तो कह दो सर सो फार आई एम नॉट रेडी, बट वेरिएंस जो अपना बेसिक्स है वो ना आए फिर मुश्किल। ओके, सो वाई IPM हो गया। सो व्हाट विल यू ब्रिंग टू द क्लास ऑफ IIM Indore? Sir, I believe one of my biggest strengths is structured communication. That can be seen from my CV as I have participated in MUNs and debates. That has taught me how to communicate and how to get my point across. On top of that, before. So, जैसे आप बोलोगे 80% चांस है, so convince us that why we should select it. Okay. So right now you've asked me. Okay, sir. इतना क्यों सोचना, डर मुझे लग गया। अपने पास 10 पॉइंट होने चाहिए, वाई वी शुड बी सिलेक्टेड। कम्युनिकेशन अभी हम बोल के चलते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ है, वो चेक कर रहा है और प्लस देखते हैं क्या बोलते हो और कैसे हमें कन्विंस करते हो। Okay, so as I was saying, on top of that, my weakness used to be not listening to other people, which I have definitely improved upon. So that's one reason you should select me. Also, through my research paper, I learned a lot of patience, and I learned the value of not forming opinionated or preconceived biases. Instead, I learned the importance of how to go in depth and how to really provide evidence and then form a conclusion. Football also. When they ask you to convince about why you are suitable for IIM Indore, Yes, sir. I think you should start with the first values. Values. I share values, what IIM Indore values. Okay. I have values in me which IIM Indore likes to inculcate in its students. IIM Indore says, क्या है उनकी टैगलाइन, पता होनी चाहिए आपको हर इंस्टीट्यूट की जहाँ जा रहे हो उनकी प्रोफेसर की बनाई हुई टैगलाइन, जिसको दिन रात जीते हैं, जिस लोगों के नीचे लिखा IMS ट्रस्टेड फॉर सक्सेस इज आवर टैगलाइन। हम रोज हर टाइम उसको ब्रीथ कर रहे हैं। तो जब आप उसको उसकी टैगलाइन कोट करके बोलोगे कि मेरा ये वैल्यूज तो मेरे में है ही, डेवलपिंग सोशल कॉन्शियस मैनेजर्स is the main motto of and their main driving point of IIM Indore. Creating socially conscious managers. Socially conscious. आप तो सोशल वर्क करके जा रहे हो, वहाँ से स्टार्ट करो, सबसे अपीलिंग। सर आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग which because of which I should get selected in IIM Indore are my values, which match perfectly with the values you like to inculcate in your students, and by through which you want to create socially conscious managers. पहली चीज। सेकेंडली आई एम ए फाइटर, यहाँ आ जाएगा वो वाला बता दो। थर्डली आई एम क्वाइट एस्पिरेशनल। फोर्थ आई कैन वर्क वेल इन टीम्स। सो दीज चार ही मतलब ज़्यादा। पढ़ाई का नंबर देख चुका होगा, इंटरव्यू में बुलाया, एटीट्यूड देख, वैल्यू देख, बाकी वो जो ग्राफ रूप है वो बनवाते हैं। एक बंदा वो ग्राफ बनाने से डिमांड सप्लाई के होते हैं ना, डिफरेंट सिनेरियो, वो एक बनवा लेते हैं। So since I'm from a PCM background, I'd say physics Okay, got it. or maths. What is the Higgs boson particle? What is it? Higgs boson particle. What particle? What is that? I don't know. फिजिक्स का तो पता होना चाहिए। दोबारा बोला, I didn't. What is a collider? Large hadron collider. क्या होता है? So vague idea. I have a vague idea. Okay. Which is A collider is basically something that accelerates atoms in order to split them. okay. And what was the biggest
collider in the world? Where is it? USA. Quantum physics, what all is covered under that? Any latest invention related to quantum physics? नहीं पता, पढ़ लेना। PCM का मतलब ये नहीं है कि बी स्कूल वाले हम नहीं पूछेगा, वो IIT वाला, IIT प्लस IIM वाला बैठा होगा आपके इंटरव्यू। वो स्टडी PCM in +2, then who has done IIT BTech, worked in company. What is nanotechnology? How it is used in paints? नैनोटेक्नोलॉजी का भी कुछ नहीं पता, तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है? तो थोड़ा इनकी लेटेस्ट इन्वेंशन इन केमिकल इंडस्ट्री, लेटेस्ट इन्वेंशन इन फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी, ये सब आपको बताऊंगा। स्पेस रिसर्च, व्हाट इज न्यू हैपनिंग, न्यू इन्वेंशन इन स्पेस साइंस, Okay. how India reached Mars, what were the calculations, how the India's plane, this spacecraft moved from orbit to orbits. At least इंटरेस्ट रखो, ये नहीं कि मैंने पता ही नहीं, मैं वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में आता, ये सब पढ़ के जाना लेटेस्ट जो हुआ। ठीक है सर। India's Mars mission, why it was unique, why it was so successful and how it happened। आपको पता है ऑर्बिट्स में उन्होंने पूरी फिजिक्स यूज करके पहले थोड़ा अर्थ के ऑर्बिट में घुमाया, वो फिर दिया, कहीं push. बाहर गए, फिर जाते फिर मार्स के ऑर्बिट में पहुंचे। Yes. It was successful and it was very economical. लेटेस्ट जो नहीं हो पाए लॉन्चेस, फेल हुए इंडिया के चंद्रयान चंद्रयान 2 क्यों हुए, क्या रीजंस थे, क्या कर रहा है DRDO, सॉरी इसरो उस पे क्या कर रहा है, एक्सेट्रा। हाउ ड्रोन्स ऑपरेट, पता है नहीं पता। हाउ ड्रोन्स ऑपरेट इज थ्रू GPRS। GPRS इज व्हाट टेक्नोलॉजी, GPRS क्या पूछ सकता है आपसे डिटेल में, व्हाट इज GPRS, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द कनेक्शन विद सैटेलाइट। आज सवेरे UK का डिफेंस सेक्रेटरी था या डिफेंस मिनिस्टर प्लेन में, उसके प्लेन का रशिया ने हैक कर दिया GPRS। दैट मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स बिकेम एज लो एज जीरो, कॉम्प्रोमाइज एंड इनइफेक्टिव। और उसे पता ही नहीं मैं किस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा है मेरा, मैंने किधर से किधर जाना है, किधर गाइड, किधर लैंड करना है, क्या करना है। फॉर लॉन्ग टाइम देयर वाज नो कनेक्शन विद द होस्ट, इसको बोलते हैं कुछ जो प्लेन्स को परमिशन देता है करने में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC। There was total lack of communication, ATC, total lack of iOS, even the phones did not work. So यूक्रेन में कल ही काफ़ी बम्बार्डिंग किया है, उसको ट्रैक करोगे तभी होएगा। और कुछ गवर्नमेंट What is Indore famous for? वेरी गुड पूछा भी था शायद। Indore. Indore is first of all the cleanest city in India, हाँ, and I don't know what it's famous for. छप्पन क्या बोलते हैं उसको, खाने वाला स्ट्रीट है Chappan. छप्पन स्ट्रीट का ही नाम है, छप्पन रोड कह लो या छप्पन स्ट्रीट है, वहाँ पे वेरियस फूड आइटम्स यू गेट, इट्स वेरी फेमस। Okay. Even in Accelerate interview he was asked about it. So should I ask first in what sense are you asking the question? नहीं मतलब Why food is Indore is famous? One Indore is is food, famous for- Indori poha, हाँ, Indori food, then Indore. spiritually there are two places of significance in one city, which is rare. आपका महाकालेश्वर and ओमकारेश्वर temple, both are in one city, Yes. which is not true for many cities. So that is one thing unique जो इंदौर में है। Ujjain is also very nearby. हाँ, Ujjain is also Ujjain. 40 kilometers. so वो है cleanest, but again data कि why cleanest city, because it is one cleanest city for last 4 years in a In a row। row. Yes. मतलब एक बार नहीं बने। वही, हाँ 4 साल से cleanest city चलते आ रहे हैं, that is why it is the cleanest city। How do they do it? वो लेवल 2 हो गया चलो, बट 3-4 चीज़ें हैं पता होना चाहिए। What is famous about IIM Indore campus? So मैं campus tour में देखा. देखना क्या नहीं। Why IIM Indore में campus को नंबर 1 पे Best. होना चाहिए। It is the best IIM campus
अक्रॉस फुटहिल्स पे है 190 एकड़ का कैंपस है. Okay. There's an Olympic size swimming pool, squash court, 2 टेनिस कोर्ट. मतलब बहुत ही अच्छा कैंपस बना हुआ है. So that is a very big attraction for Indore. ठीक है मतलब सही है बट हाँ सिटी वाई फेमस Why city campus का देखना है. कैंपस का पता होना चाहिए. कैंपस देखा होना चाहिए. सिटी कैंपस टूर है. लाइफ एट IIM Yes sir. इंदौर उनका ऑडिटोरियम है जहाँ हर वीकेंड में मूवी होती है शाम को. स्विमिंग पूल है इंटरनेशनल लेवल. क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड है. आप खेलते हो कोई गेम? Football. तो फुटबॉल बोलोगे मेरे को. कैंपस में फुटबॉल आई एम फैन ऑफ फुटबॉल. तो ये सारा कैंपस का पता होना चाहिए. क्लासरूम्स environmentally very well nicely designed campus. By gravity lot of things flow there, water and all. ऊपर एक ब्लॉक है एडमिन ब्लॉक. उसके बाद सारा स्टेप्स में है. हिल पे है टॉप ऑफ द हिल. You have done MUNs. Yes. Who is Secretary General of your? Antonio. What is this for? Antonio Guterres. Who was the Secretary General before that? I think I don't remember the name. Sorry. क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन में हाँ जी. तो पता होना चाहिए. UN के बारे में हाँ, काफ़ी गुटेरेस था, कोफी अनान था, उसके पहले बाकी मून था. मतलब ये सब पता होना चाहिए. Which country were you representing in UNs? Did you have a particular? No, not a particular. I represented a different country. However, the most challenging one was in ITM MUN. I represented Afghanistan, and the Okay. topic was Afghan takeover of Taliban. So Okay. that was a very Who is leading Afghanistan right now? Taliban. The person, Yes. I don't know. 2021 it was the MUN. So who was the person at that time? Taliban spokesperson he was asking. The leader? I don't know. पता होना चाहिए. आप delegate थे ना उस country के? But it was Leader कौन है? 5 years ago now. खामेनी करके कोई person है. ईरान का नहीं था. पता नहीं. I don't know. That's मतलब check Iran's- करते हैं ना. हाँ. But you should know. जैसे I also did a lot of MUN. Okay. Whichever country I represented उसका leader तो पता होना चाहिए मेरे को delegate को. सही है. Why I am Indore में थोड़ा ये भी बोल सकते हो. There are many students from my city Ludhiana who have made it to IIM Indore and they are doing very well in the like जैसे अभी तो आपको मिलेंगे. दूसरा रणवीर सिंह है हमारा KVM से है. He is also in Blinkit. ये भी है. अरमान मकबू KVM से था IIM Indore में. ये PCM का है. मैं इसका नंबर आपको दे दूँगा. आज शाम को इससे बात कर लूँगा. Okay sir. भैया को बताओ कुछ क्वेश्चन वगैरह केमिस्ट्री मैथ के क्या क्या पूछेंगे. बंदे के पास अपने जैसे 70 बच्चों का और एक्सपीरियंस होता है. तो ये टेल यू समथिंग थोड़ा सा लिटिल मोर इन डेप्थ मोर स्मार्ट है. बाकी ठीक है करने की कोई बात नहीं है. डरे डरे हो नहीं. मैं स्माइल के साथ थोड़ा जाना. prep स्माइल करना पड़ेगा. प्रेप करना पड़ेगा 4 घंटे कम से कम. जैसे CVT से और जीपमेट हो जाए उसके बाद और ज़्यादा. अगर उससे पहले आ गई कॉल तो फिर और ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है. अब आपका फोकस किस पे है? जीपमेट पे? नहीं इंटरव्यूज पे. बस फिर अब आपके केस तो फिर 10 घंटे 12 घंटे रोज कर दो सारे वो क्वेश्चन. उसमें फिजिक्स के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी केमिस्ट्री के हैं. भी हैं. Yes. और आज के जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे. ठीक है. Yes sir. गॉड ब्लेस. ऑल द बेस्ट. खुश रहो. ऑल द बेस्ट. गुड. यू ऑल थिंकिंग. आपको मैं चॉकलेट देता हूँ. वही नोट्स भेज दिया है. यही हाँ. बनाया नहीं.